S1 डन हो गया। हाँ S1 डन हो गया। S1 तो डन हो गया S1 अगर आगे जाके ऐसे हो रहे हैं दैट मींस कि कंटिन्यू जब भी वो इकट्ठा होता है काइंड ऑफ ट्रेंड चेंज ही होता है ऑपोजिट जा रहा है। There is no 70% at this point of time and it's new time. बेसिस ऑफ प्राइस डाउन मतलब अब सेलिंग में रहेंगे ज़्यादा। ये अभी उनकी ब्रीफ आ जाएगी मॉर्निंग में। ये आज बहुत रफ डे है जी। सो आज रात भी, कल सुबह भी, कल शाम भी, परसों भी, जब तक ये तूफान अर्निंग्स के नहीं बाहर जाते ना, तो आई एम नॉट टुडे और टुमारो मे नॉट ट्रेड। सो हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ओके ओके, मैं देखता हूँ। नो प्रॉब्लम।
Good morning, Jay. We'll get started shortly. और अगर बैकग्राउंड मजेंटा है तो फिर Okay, fix the images on here. This is good. This is good. Let's just put disclaimers up. Good morning, जी सर. याद रखिएगा इंटरेस्ट रेट 9 बजे. जब जब इंटरेस्ट रेट सोचें पर दिया सोचें. सही जगह पे बड़े भाई Very nice. we work together. All right. Let me start my brief shortly and then Daniel will start his. Good morning, everyone. Good morning, G. Tuesday, 29th. What is today? Base is down. Base is up. Pressure is down. Base is up. Pressure like yesterday. And we're going to 21,280 is the number to watch. 21,280. All right. Move this out of the way. And let me check all the cameras. Go. Join the session. 6-3. सारे सिनेरियो ठीक है कभी नहीं करने का लेकिन फिर किया नहीं और वो कर लेते ना तो नहीं बड़ा एरिया पे आई थी ऊपर हाँ, जाके बड़ा अच्छा। और Nasdaq to the dot hit हुआ एरिया to the dot expected high. ठीक है very good. चलो वेरी गुड क्योंकि मैं निकल गया था मैंने देखा एरिया बड़ा डॉट पे हिट हुआ जी. हाँ सर एरिया देते हो एरिया कस्टमर तो मौत किसी वेले भी आ सकता है पता नहीं कस्टमर भी किसी वेले आ सकता है. So we'll be ready when this opportunity hits. All right, let's do this.
Let's put up the banners. And we are good here. We're good here. Instagram is good. YouTube is good. Everything is good. All right. आप एक आप जाके पूछ रहे थे 15 दिन के कैंडल मिडबैंड से नीचे आई 15 दिन के कैंडल आपकी गोल्डन बैंड है All right. Good morning, everybody. Wednesday, January 29th, 9:09 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com. Welcome to our in-office broadcast. Let me do the camera check. We have camera one is good. Camera 2 is good. Board cam. Camera 3, screen cam. And camera 4, classroom cam. So that is all good. We are live on all the platforms. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, RTMP, TikTok, Zoom. I think only Discord is missing. So let's get started. First of all, I'll start something new today. Hopefully that'll carry on and I'll stick to it. So let's hope that across the globe, whoever is listening to us, they make good profit every day. And may you get the discipline, not the skill, not the talent, because primarily the thing is that you have the power to hold the trade until all the setup is right. Whether you do a mid-band trade, area trade, so please don't gamble. Please don't just for the sake of it put a trade in until you're ready. And interest rate today is going to happen for I believe US, maybe Canada too. So 2 p.m. is going to start the fireworks. On top of it, you have earnings from Meta. You have earnings for trillion-dollar companies, 3 of them today. So the effect will start around 4 o'clock, resume in the evening, tomorrow morning, and then tomorrow evening we have another $3 trillion companies more coming out with earnings. So until Friday, things, and then Friday you have the expiration, last Friday of the month. So it's going to be a rocky thing, and we will work with areas, we'll work with everything else. But please don't be in a trade at 2 o'clock. I'm not responsible. So, yeah. हाँ आप मैं ले सकते हैं, हल्का पुल्का लें, 1-2 पॉइंट लें, लेकिन सिर्फ 2 से पहले सारे पोजीशंस में ना हो, क्योंकि वो रॉकी स्टार्ट लेगा. क्योंकि लास्ट टाइम 1000 पॉइंट का था, 1000 पॉइंट, कहीं वो एक्सट्रीम लो से 600 पॉइंट गिर गई. उसके बाद अर्निंग्स है, फिर अर्निंग्स का इफेक्ट कल सुबह तक आएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने पोस्ट मार्केट के स्टेयर बढ़ने हैं. तो कल भी रॉकी है और कल शाम फिर अर्निंग्स आ रही हैं. तो ये सारे बिल्कुल ये न्यूक्लियर बम वाले डेज हैं. 8 दिन हमारे सर एक्सट्रीम. सर लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट पे एक्सट्रीम से 600 पॉइंट गिर गई. तो या स्टॉप लॉस लगाएं कि यार एक्सट्रीम पे आती है तो मैं बाय करूंगा. मैं तो खड़ा हूँ R3 S3 पे, वहां से स्टार्ट करूंगा. और अगर गिरनी शुरू हो गई तो 1 पॉइंट पे आके कहूंगा यार के, और या चढ़ने एक्सट्रीम हाई से भी निकल सकती है. ऊपर वाला नंबर 22,450 है और नीचे वाला आपका नंबर है 19,000. मैं अभी आपको जो उस दिन गिरी है 1,000 पॉइंट आपके साथ, ये पिछला इंटरेस्ट रेट था ना. यस 10 सर 21,000, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट यहाँ से. तो क्या प्राइस है? 21,000, 20,600 से 20,000 तक ये इसका रूम है. तो पूरा 1000 ऊपर और 1000 नीचे यहाँ से. तो हाँ, लेकिन ये पिछला इंटरेस्ट रेट देख के, लेकिन हुआ नहीं. अब देखें जिसने अब मिड बैंड लिया, 2 पॉइंट ले लिया, गैप ट्रेड था, या यहाँ तक चलाते रहे. मार्केट में जरा ना एनर्जी आ जाएगी 2 के बाद, राइट. सो बट अ ग्रेट डे टू पास योर EA. आप उठाएं, आंखें बंद करके 4 लॉट कर दें एपेक्स में, 1 नॉर्थ 1 साउथ, 1 पास हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. So let me just connect my, hopefully his echo is not there. He's got a new setup mic, and then that causes it. Sorry guys, the mics are local and you guys can hear my audio fine. Sorry I couldn't get to do the low of the bar, top of the bar video. I'll try to do it today. So this mid-band worked, both were green. That was your first retracement, and you're actually done your 84 to 86. You're done your 2 points. 100% you're done your 2 points.
and it's actually was bouncing on top of the S1. So S1 is done, guys, for ES, and not yet for Nasdaq. So things are good. Morning, G. So our live stream is on everywhere. Let's look at night sessions. Content, view my channel. रॉकी अभी आपको नहीं मिड बैंड तो ड्यूरिंग न्यूज करना ही नहीं है ना, वो बहुत रॉकी हो जाता है काम. What's going on with live stream? I am live, but how come I'm not seeing users? Oh, I made a mistake, guys. Sorry. Okay, now you guys should be able to. News ka hai kya hai, sir? Just check our website. That'll tell you. Now you guys should be tuning into the live stream on YouTube. So all the free streams are gonna lose audio, or maybe the commentary. Facebook will lose it, and then I'll resume after it, because if there is a new company I have to explain. Sir, isko trail kar le. Anybody who's trailing, it's great mid band. Ja raha hai upar. Almost pehla trade aapka done ho gaya. 9 market khulne se pehla hi pehla trade gap trade tha. Very close to gap trade tha, but so live stream users should, yeah, they're starting to come in. That's good. So the free stream is going to disappear very soon. नहीं एवरी डे चला जाता है, एवरी डे शाम को रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है. हाँ. आज S1 भी डन हो गया, मिड बैंड गैप देन ऑल भी डन. S1 भी डन गैप के साथ, पहला ट्रेड डन, पहला रिवर्सल डन. So the first reversal going up or going down is the highest probability. You know, as the PDF, buy after a higher high, buy from the first higher low. So look, both chart turned green around 9:15. 15:10 is green, 30:20 is green. नहीं मेरा मैं Nasdaq दे. अच्छा हाँ नहीं सर मैं तो ना लाइव भी था क्या देना. मैं तो सर वेंसडे तक की था, इधर नहीं आया. इधर असल में मैं पता क्यों ले लिया, वो लार्ज ट्रिगर्स ग्रीन होने शुरू हो गए थे मेरे हिसाब से. तो मैं कहा भाई वो ग्रीन शुरू हो रहे हैं, इसने ट्रेंड बदल जाना है, तो ग्रीन ही हो गया ना थोड़ा सा. अर्ली इंडिकेशन लार्ज ट्रिगर ग्रीन हो गए थे. उसने हायर हाई बनाया तो 15:10 पे पहला रिवर्सल आया, नीचे आया, मिड बैंड तक आया. और अगर आपने ले लिया है तो आपके पास आज के 3 से 4 पॉइंट आ गए, और उसके बाद इस बार में लो ऑफ द बार भी डन हो गया. तो 2 पॉइंट उधर और 1 पॉइंट इधर, 3 पॉइंट आपके 9:15 से 9:18 के दरमियान 3 पॉइंट डन हो गए ईएस के. So it's okay. For those joining late, it's okay. It's not their fault. The market came early, but the first setup is done. Actually, prior to that, the second setup, did it touch the midband when I was walking in at 8:34? No. 1 tick, right? So, but S1, the areas got updated by the software. But if you looked at S1 is done. So, for ES guys.
So look, the price went inside. This happened slightly earlier at 9 o'clock or so. So it's after the areas were posted. S1 we had a range from 83 to what 80, and that just got done. Now the lowest next range is S2, but please guys, we only have until maybe 11 o'clock to. So if you don't get a trade in today, it doesn't mean you're going to miss out on something. You know, these companies have been here hundreds of years, so you don't have to worry that if I miss today, tomorrow, Friday, I will lose anything. No. But first reversal, large triggers, everything is green. And now if you were if you entered at 85, you at least got until 86 or 87, bottom of the bar. So S1 is done. 2 point loss and properties. लेकिन ट्रेल सीखें क्योंकि उसमें फिर फायदा ये होगा कि अगर आप रिस्क बढ़ा ले सकेंगे आगे. So I don't plan to risk my PAs, my EAs, my Perdia, my FTMO, my nothing today, because I want to see where the bodies fall, like after the disaster. So on our superareas.com, guys, if you can see the stream, there are 2 links for the stream. I am doing 2 links. Number one, there. Let me post it on my status where you can get the stream link, because I am streaming for you guys at 7 platforms. Of course, some are free, some are premium. So the premium ones are at least 2. So one stream is my Zoom, one stream is your RTMP, and one stream is your live stream. So let me paste the status. So there's 3 ways to join in. So let me do this. Nasdaq सामने लगा दीजिए. मैं सर जब जैसे ब्रीफ खत्म होती है ना, तो मैं फिर क्योंकि उन्होंने उनको कंट्रोल चाहिए होता है, तो जैसे ब्रीफ खत्म होती है मैं लगा देता हूँ. नो प्रॉब्लम. And after today, I will explain around 11 o'clock a new company that is coming, and it's actually an old company that has changed the rules, and they're going into daily payouts. So between Legends and Perdia, there's a new company, because every single company out there, they reach out to us and they want traders. They don't want gamblers, they want traders so they can manage the funds, right? And of course, we're giving Legends quite a few Apex, like payouts are coming. So this company reached out and says, we're going to relax some rules, send the students our way, see if they can pass it. And the benefit of that is, you know how PAs, you have to wait like 10 days, but this is a new company. You still have to do PEA, you still have to do a PA, yes. But after you're done your PA account, you can get a daily payout, and they don't have a limit. There is no 450 limit. There is nothing like that. So they have relaxed the rules a lot, right? So at 11 o'clock, I'll give a full presentation on this new company that allows you. So it is a bit of a hybrid model like Perdia, but Legends, Perdia, and this company. So how it works, what are the rules? We'll talk about it, because remember, my job is and I took 5 accounts. So just because I have to try it too, right? They pay. Yes, they pay. Number 2, account, the cost I will show you. I will log in and I'll show you. I took 5 accounts because they only allow maximum 5. They don't allow you 10. They don't, the 5 accounts. Daily payouts in all 5. Yes. So you can, if you make $100, you can get out $500 same night, right? So
You make $1,000, you can get out $5,000, right? The same night. So the daily payout companies are coming, and I will explain at 11 Eastern on how that works. Let's नहीं सर, पहले वो देख, मैंने कहा ना लेजेंड और पर्डिया के दरमियान हाइब्रिड मॉडल है। हाँ, स्टेटस है, आज उसके रूल्स बता दूंगा, ठीक है। और कोई लिमिट नहीं है यार, पहले ही दिन वो कहते हैं कि 1500 में से 700 बना दो, हमें परवाह नहीं, वो है ना, और 5 दिन में फिनिश कर दो। वो फिर देखिए, हर कंपनी मार्केट शेयर लेने के लिए लड़ रही है, तो हमने तो आपको वो देना है ना जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेजेंड्स एपेक्स से बेहतर था, हम लेजेंड्स पे ले आए। अगर कोई लेजेंड से आगे अच्छा आ जाएगा तो हम, अब पर्डिया है वो लेवल 3 है, लेकिन पर्डिया महंगा है, 750 का है। लेकिन पर्डिया और लेजेंड के दरमियान भी अब एक गैप फिल हो रहा है, वैल्यू गैप, क्योंकि एक ऑप्टिमल कंपनी ढूंढ रहे हैं ना। हमने लेजेंड्स को इसलिए प्रमोट किया था एपेक्स पे कि लेजेंड्स में एंड ऑफ डे है, आपने 200 देखा, क्लोज 150 पे किया, 100 पे किया, आपको 100 मिल गए। एपेक्स कहता नहीं भाई, 200 देखा था, 199 भी लिए तो 100 काटूंगा, वो स्टिंजी है ना। लेकिन सबसे मुश्किल है, फिर लेजेंड आया। अब लेजेंड्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो एक और यूएस की कंपनी आ गई कि हमें अप्रोच किया सुपर एरियाज को कि भाई हमारा बैनर ऊपर कर दो, लाइक दिस, यू नो हाउ फाइट इज जस्ट टू द बैनर की फाइट है। यूएस कंपनी है, अभी तक तो ठीक है सर। एफटीटी के बाद मैं किसी का डिस्क्लेमर नहीं ले रहा भाई, आप आपने लेना है आप लो। मैंने 5 लिए हैं, गया तो मेरे भी 5 किया, तो ईए मैंने 5 लिए 25,000। ये एक्सप्लेन सारा करता हूँ 11 बजे, तो नो प्रॉब्लम। तो पीए है जी, नहीं, क्वांट टावर एक ऐप है, वो तो प्लेटफॉर्म है, तो वो उसका इससे ताल्लुक नहीं। सो देखिए, ये कल की एक्सट्रीम हाई पे, एक्सपेक्टेड हाई पे घूम रही है, वहीं से घूम रही है। अब इंटरेस्ट रेट से ये 1000 पॉइंट तो मैंने सोच लिया भाई, नैस्डैक को तो, अरे हो है दो आज इन कनाडा का, यूएस का, और 3 अर्निंग्स आज, 3 कल सुबह इसका इफेक्ट आएगा। याद है टेस्ला ने अर्निंग दी, आज रात को आएगा, फिर कल सुबह को आएगा, फिर कल शाम की अर्निंग्स है। तो फ्राइडे तक आप जो है ना, एक मेटा, एक फेसबुक, एक मेटा है, एक थोड़ा टेस्ला है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, गूगल नहीं है, मेरा नहीं है, तो आगे पीछे ही होंगे, अगले हफ्ते आ जाएंगे। सो यस, इफ यू लॉग इन टू सुपर एरियाज पोर्टल, ऊपर सारा लिखे। आज तो आपकी है माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड टेस्ला। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, अब ये हो सकता है जिस तरह लास्ट टाइम बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ऊपर, मेटा नीचे, बैलेंस हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट नीचे, मेटा नीचे, सारा नीचे डूब जाएगा। फिर साथ टेस्ला भी खड़ी है ना, वो तीनों कंपनी ने लाइक 11% होल्ड किया हुआ है, 7%, 10%, राइट। सो they will move Nasdaq and ES today, so it's exciting. It is very exciting. So just the camera checks are good. जी sir. Oh, absolutely. Let me just bridge the mic. Just 2 minutes. I'm gonna bridge the mic and then I'll come when he starts his brief. Absolutely. All right, let me bridge the mics in.
He hasn't started speaking yet. He hasn't started speaking yet, guys. So if you hear these beeps, that means mics are connected. Now try. जी अस्सलाम वालेकुम sir, are you there? I also can't hear anything. Assalamu alaikum sir. So today is a holiday or?
क्या ये इसके ये देखो ठीक है, ये तो तोड़ दिया इसने, क्या करूं 20 पे उठा लें? 500 में भी अच्छा है, ये 500 पे भी बहुत शुक्र होता है। तो 500 पे वाला अच्छा हाँ 15 में भी उठा तो जाएगा ऐसे। देखते हैं। टोटल क्यों है, कितने नीचे कहाँ तक आई थी? 35 तक, 33 तक। उठा ही सकते हैं। उठी तो है। हाँ 60 पॉइंट है। मार्केट खुलने पे क्या किया इसमें, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। नाम की तरफ है तो नीचे का टेस्ट कर रहे हैं ये बेसिकली ऐसा नहीं किया मैंने ना चाहिए। मैं देखे वैसे तो तब Good morning, sir. I'm not hear you. Are you there? Speaking yet? Anybody listening on Zoom or a thing? He's like, somebody muted him on his personal, so I don't know who did, but please keep you. Good morning. Good morning, Assalamu alaikum, Namaskar, Sat Sri Akal. Hello guys. Microphone check. You can hear me, Ji. Assalamu alaikum, sir. Microphone. Ji, walaikum salam. Finally, yeah, I got big trouble with this mic, so I have to restart everything. So now it's fine. Sorry about this inconvenience, guys. Sorry. Anyway, today try to stay away from the market, guys, because if you are done from S1, you have to be very careful. Just chill today. Just stay away from the market. But first, a quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday. You will make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses. And do what you see, don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or our graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, high to go low would be a good strategy. Pressure is down, base is up. S1 already bounced back from our S1 area from 80. It came down to almost 79 and bounced back up to 90. That's a beautiful 10 points push to the upside. Same thing with the, if you look at the Nasdaq 520 S1, but today our high S&P 500 high is 61.48 to 57. Our low is 40 to 30. After 2 o'clock, we know after 2 o'clock nothing happened, but 2:30, after 2:30 we'll see a firework. Best is just stay away from the market today. Just hit and run from area to area. S1, get in, get it done, get out. Or S2 also is a good area. Best is high to go low. If they are not changing the interest rate today, so it means today at 2 o'clock, I don't think so they will cut the interest rate or change anything. So we are not going to talk about the diamond pattern today because 2:30 is a very, very important conference is coming.
And after 2:30, we'll see either push to the upside or to the downside. Best is high to go low today, high to go low. Tomorrow, our GDP is coming, advanced GDP is coming, pending home sales is coming Friday, core PCE index is coming, and employment cost is coming, personal income is coming. Today, the best is just stay away. Dow is pushing back up. Actually, Dow already breakout night session high and getting very close to our R1 area. Dow, Russell 2000 today, it's almost synced with S&P and Nasdaq. So Nasdaq, our Nasdaq low is Nasdaq high is 900 to 950. Nasdaq expected low is 21,300 to 250. And again, guys, high to low would be a good strategy today. Slow until 2 o'clock, and after 2 o'clock, then 2:30. Best is just hit and run and stay away from the market. British pound very close to expected low. It just tanked after, if you see 3 a.m. when open, after open, the British pound came down very close to expected low. Canadian dollar already hit our expected low for the day. So Canadian dollar bouncing back from our expect very close to expected low. Bouncing back up. Euro very close to expected low. Same thing, it's bouncing back up. And right now, in between S2 and S3 area. Crude oil is not doing much. If you look at the crude oil, came down from this morning high. $1.15 push to the upside and $1.15 push to the downside. 100% it came down to the same area, whatever it has, and DB is there. Gold is up. Gold is in diversion right now. So after 2:30, we'll see gold push either. Myself, I will stay long in gold. If I ever trade, I will go long. And FDAX, you see huge push to the upside. FDAX, very strong push to the upside. Very close to expected high for the day and almost kissed our expected high for the day. And R2 area, daily R2 area. Our copper is up. Copper really hit our expected high for the day. So done for the day for copper. Copper, very strong push from Euro session, take copper to the upside. And I'm expecting copper further push to the upside. Silver already hit our expected high for the day. $31.50 right now, 54 cents. So our high for the day is done. Silver, very strong push. Same thing. Euro session took silver to the upside. Very strong push. Silver to the upside. Natural gas came down yesterday. Went very close to our expected low. Actually, I almost hit our expected low for the day yesterday. And right now, it's retwisting back up 27%. Push to the upside. Bitcoin is not doing much. Bitcoin from this morning, yesterday it went up 8,500, almost 8,600, $1 less, 8,600, and right now $1,435 retracement, 48% off that push to the upside, and same thing with Ethereum. Ethereum went up 110 and came down $78. Right now, below value real, below PP. Again, guys, try to stay away from the market. Have to be very, very careful today. 2:30. Anything happen after, it will happen after 2:30 p.m. So if you are done, get in, get it done. Actually, try to. The best strategy would be hit the area, get it done. Same thing, Nasdaq, you see it hit 500, actually 498.75. If you get in for 500, 510, and 10 point, 20 point, 30 points, and be happy with that. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here, G. And sorry about that inconvenience this morning. Assalamualaikum, Daniel bhai.
If there is no change in the interest rate, what's your opinion on the market direction? We're going up or down? Diamond pattern, the diamond pattern. If 2 o'clock, wherever the price is, if it goes down, it will come to the same place. And if a price goes up from 2 p.m., it will come back to the same place before 2:30 p.m. And same with the gold? Yeah, same thing, ji. Same. Okay, thank you. Okay, ji. Take it. That was the brief. Thank you very much. Area for Nasdaq S1 is done. It hit our S1, bounced back up. You're done Nasdaq. If you're done Nasdaq, S1 for ES is done. S1 for Nasdaq is done. What a beautiful, beautiful trade from the Nasdaq on your S1 range. The computer. So our algo had predicted from S1 was 520 to 500. Now it's going there to retest, please, right now. So, but from 500 you got your money. All of it is done for Nasdaq, because I can't say anything because of ES. No S2 got touched yet. So Nasdaq S1 is done. ES S1 is down. Now Nasdaq S2 we wait for, and of course ES came very close to it, 74, and computer had predicted some numbers, and we just sit and wait. So from the mid-band of 74, it gave you a couple of points. Now it's testing the mid-band of 3020. Value area, if you see, is there. But Nasdaq wants to retest S1. It's heading down. Nasdaq wants to retest S1. So it's 21,700. So it touched our night session low as well, and so that was 560, actually 550, Asia and London combined. And so now Nasdaq went as low as 495, 21,495. And today you'll probably see me talk more on Nasdaq because of the speed of interest rate and everything. So it's coming back, Nasdaq, to test S1 again, one more time. But for ES, guys, keep doing it. 3020 mid-band worked because coming from an area was a gap trade. 3020 ES is done. That was 82 to sell. If you're taking a trade on 3020, ignore 1510 because that's not a valuable, that's a lower time frame. But that's zoomed in inside the candle. So 3020 mid-band was at 6081 or 82, and you're already done a couple of points from mid-band of 3020. Now S2 is coming. Let's see. We will see if S2 is a good support. It depends on Nasdaq. If Nasdaq goes to, let's do some math here, quick math, because we know every Nasdaq point is around $7 to $8. Point is about $1 on ES. So if mathematically speaking, if Nasdaq goes to 420, right now is 520, it's 100 divided by 7, it will move 14 points on ES. So 14 points on ES is, where are we right now? So 6080 minus 14, that will put us below S2. So be careful. Don't take S2 because S2 is different. Nasdaq S2 is different. So if Nasdaq goes to S2, definitely ES will penetrate below S2. So that's where we kind of, when they're kind of same, I understand, because every Nasdaq point that is every 7 or 8 points is 1 point on ES because of the weighted ratio. So that's how they move generally. So like yesterday I explained, if the price got to expected high, you have to make sure ES has to go above 6104, 6103. And that's what happened last night. Nasdaq got into expected high, but ES 6104. And I was watching live on my phone, 6104, it went down to 92. So
3 times. But first attempt is good enough, right? So because so I'm a bit, if this whole candle, 60-minute candle, which has 10 minutes left for Nasdaq, if it penetrates as close to, first it has to test PP, because pivot point on Nasdaq is sitting at 21,460. So why am I speaking again Nasdaq? I can talk more because of, and the behavior will change. So S1 is done. It is breaking almost as S1 on Nasdaq. So if it shoots sharply towards 420, it has to, now it's almost at 508. So 420 minus 508, you're 88 divided by 7.5, an average 7, so 11 to 12 points. So 79 minus 12, 67. Yeah. So 67 could be a better entry. Could be but it could still bounce from 73 to 70. That still is okay. But right now, let's see if Nasdaq tested it twice. Is it a good support for Nasdaq? We don't know yet. It went to 494 so far. Still, candle has 8 minutes and 50 seconds every candle. 15-minute candle, 30-minute candle, 60-minute candle, because the rest of the world is trading on candles, so they're watching that number, right? Hey, where would the candle would be open? We don't care about candles, we care about support and resistance and price action, so slightly different algo. So second attempt of area passed as well on S1. Is it a good support? We don't know. So while ES is still inside your, so yeah, S1, but from 82 or 80, if you 81 you entered, it went down as low as 76, mid band of 30-20. 1, 2, 3, 4 points. However, I was expecting it would make a diversion, go to S2, and then that's what I was hoping, because that was a gap trade. And let's see, both markets are now somewhat in sync. Only difference is 100. So the difference is 580. 80 divided by 7 is 14, and 80 minus 14 should be around 66. Okay. Okay, let's see if this is a first pullback, large triggers. Let's see. Because Nasdaq doesn't want to come back up. There you go. Your first pullback, 2 points are done. Congratulations. Large triggers were twisting, 2 point, came from a higher, beautiful gap trade, 2 points, you're done.
10:30 है न्यूज़ 10:30 है साढ़े 10 का न्यूज़ What a beautiful trade. What a beautiful trade. Well, Mark, zero trades for me so far, by the way. Because Nasdaq, what is bothering me is Nasdaq. Maybe after 2 minutes, when the new candle opens at any time frame, we'll see how the midpoint, if it's 460 is the next number, 460, 420 S2. 1510, the BBs are just one, like dots. Is because green came up, but not that much. But let's see. Again, retracement touching midband, very close to 6082, which is there. You Bank of Canada cuts the interest rate down to 3%. One quarter. So 10:30 crude oil news, guys. Anybody trading, just watch for that. Anybody who's on maybe paying a variable rate, their payment will slightly go down on your interest. Canada, let's look at Canada. Yeah, interest rate went down from 3.25 to 3% overnight, and what big for us is 230, and then
What was the high for New York session today? 21627. नहीं वो तो रात का है ना, सुबह का 627 तक 627 तक गया है। रात का नाइट सेशन था 560 560 ते हो गया ना S1 ਤੁਹਾਡਾ वो खत्म हो गया, नाल ही S1 खत्म हो गया। ਹੁਣ 495 ਅੱਜ ਦਾ ਲੋ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ 627 ਉੱਤੇ ਦਾ 132 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, याद रखना एक्सपेक्टेड लो तो भी 600 पॉइंट जा सकती है तुम ते आज ते so if you don't put a trade in before 2 and you're not done, like somebody, I got a message from somebody who had 3 EAs on his phone. He did a long from 500 and got out at 525 and made $800 and he's shutting it down, right? He took a Nasdaq risk, so and full lot. Right, so 20 points. So 843 divided by 20, that's maybe 5 micros. ये मिड बैंड वो आना था, वो जब रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस थी, लेकिन आया नहीं. Right, so it's okay. Super. There you go. Next candle shot up. We're back up to 5. विक्रम भाई आपने मुझे ईमेल भेजी है? Okay, let me see. What's wrong here? Okay, PHP my admin. SQL search. Select star from. Check कर लें उनसे. It's fixed. No color. Another bottom of the bar is there.
बॉटम ऑफ द बार पे भी बहुत रिस्क लगता है। नहीं नहीं, लेकिन पहला वाला फास्टेस्ट वे गए देखो, इत्थों में बॉटम ऑफ द बार 2 ਵਾਰੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਡਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, as long as green ਹੈ ਬਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬॉटम ऑफ द बार ਤੇ, ਉਹ ਲੈਟਸ ਸੇ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਬॉटम, ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਆਂ 2-3 ਐਂਟਰੀਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਆਂ ਬॉटम ऑफ द बार ਤੇ ਲਾ ਦਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਲੋਕ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 30-20 ਤੇ ਬਲੈਕ ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 9 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕੈਂਡਲ ਬਣੇਗੀ 30-20 ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਤੋਂ, ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਥਰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ 30-20 ਦਾ, only ES guys, oh, not Nasdaq. I know I'm speaking Nasdaq, but the areas computer predicted 100% worked for Nasdaq and one. लाइन अपने 30-20 पे हाँ जी, ये किसी को ये बॉक्सेस है या डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं? सॉलिड सॉलिड नहीं है वो, एक्चुअली पिंक डॉट्स हैं, वो वैल्यू एरिया है। कि वैल्यू एरिया मीन यस्टरडे का जो वॉल्यूम था ना 70% इस प्राइस के दौरान हुआ है। सो पिंक लाइन भी है और रेड भी है दोनों। हाँ, एक पिंक, ये सायान कलर है, सायान कलर नीचे है, येलो कलर ऊपर जा रहा है, तो वो डिसाइड करता है आपका कि 5 बजे 70% वैल्यू जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना वो कहाँ है। तो अब उसने क्या किया, वो वैल्यू गैप को भर रही है। आपका एरिया R1 का है काफी ऊपर, ठीक है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करती है। हर चीज ही दुनिया में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, क्या वैल्यू है कितनी है। अब ये है कंप्यूटर ये कह रहा है कि 6100 जो है ना, यहां से लेके 60084 तक कल जितनी वॉल्यूम लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग की ना इस डब्बे के अंदर की थी, कि कल किसी ने खरीदा ऊपर, किसी ने खरीदा नीचे, 100 बंदों ने अगर खरीदा तो 70 बंदों ने इसके दरमियान बाइंग एंड सेलिंग की, तो अब वो अभी वो फिल कर रही है। तो पॉसिबल ये है, अब मैथ इसका इस तरह होता है, ये वैल्यू एरिया के अंदर आ गई है, ठीक है। अब पहले जाके ये वैल्यू एरिया का बॉटम टेस्ट करेगी, मीनिंग पिंक लाइन को सपोर्ट बनाएगी और भरेगी ऑल द वे येलो तक जाके, फिर वहां से बाउंस डाउन, तो येलो भी एक रेजिस्टेंस है। तो हर जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल रही है डिफरेंट मीनिंग्स के साथ। तो अभी आप वैल्यू एरिया, तो मिड बैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऊपर, येलो डॉटेड है, ये रेड जो है ये तो डॉटेड नहीं नहीं, ये रेड लाइन कहाँ पर आपको आ रही है? 6078 फिर 930 हाँ, डॉटेड आफ्टर 930 becomes a solid line. वो एक नंबर लिखा हुआ है 6078, ठीक है, हाँ, वो नाइट सेशन का लो था। यस यस, मैंने कहा मैं असल में बंद की हुई है, मैं यहाँ नाइट सेशन नहीं देखता, मैं बड़े चार्टों पे देखता हूँ क्योंकि इतनी ज्यादा लाइनें हैं, तो मैं नाइट सेशन के लिए देख रहा हूँ। एक जब प्राइस खुली थी सुबह को, तो आपको 4-5 ही वैल्यूज चाहिए कि रात को यार प्राइस बंद कब हुई थी, सुबह कब खुली है, ठीक है। हमने वो लिख दिया कि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चलेंगे, कि 78 भी एक रेजिस्टेंस है ना और सपोर्ट है, तो ये वो 9 है। अभी ये जा रही है ऑल द वे ऊपर तक, आपके कल के वैल्यू एरिया को भर रही है, कि कल जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हुई उसके अंदर चली गई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। रिट्रेसमेंट करेगा हाँ जी, 30-20 पे जिन्हें फुल हो रहा है रिट्रेसमेंट चाहिए। हाँ हाँ, रिट्रेसमेंट अब 30-20 का मिड बैंड मेरे लिए ज्यादा सेफ, क्योंकि 16 पॉइंट की स्विंग आ चुकी है नीचे से, राइट। तो लेकिन लार्ज ट्रिगर खुले हुए हैं। मजे की बात यह है कि मिड बैंड और वैल्यू एरिया वहीं खड़े हैं, मिड बैंड की भी प्राइस वही है इस वक्त, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बनेगा। तो 608 कंप्यूटर ये कह रहा है कि और 1510 का मिड बैंड भी वही बन रहा है,
6085 कंप्यूटर कह रहा है यहां से बाय करोगे ना तो आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमने ग्रीन में बाय करना है, रेड में सेल, और डजंट मैटर मार्केट का क्या ट्रेंड है। अब नैस्डैक ले गए वापस, S1 से बाउंस किया फुल ऑल द वे, S1 हो चुका है। आई नो पिछले कुछ लोग ना पिछले इंटरेस्ट रेट से थोड़े से इंक्लूडिंग माई सेल्फ घबराए हुए हैं, क्योंकि हमने ट्रेड डाल दिया 2 बजे। पर्सनली मैंने भी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरना था, ट्रम्प का वो सारा हिस्सा चल भी रहा था, वो ऑपोजिट हुआ। मीनिंग कि ठीक है, नीचे आते आते वो 1000 पॉइंट मार्केट गिर गई, राइट। सो इंटरेस्ट रेट वह सबसे मास्टर, आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, इससे बड़ा दिन नहीं होगा मार्केट में। उसके बाद आते हैं अर्निंग्स, ये 4-8 कंपनियों के। नहीं देखें, एक्सपेक्टेड ये इंटरेस्ट रेट अगर गिरा तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, और इंटरेस्ट रेट लास्ट टाइम गिर के भी मार्केट 1000 पॉइंट गिरी है। सो ये इट्स नॉट समथिंग अब वो बंदा वैसे ही उसकी बैड बुक्स में आया हुआ है, उसको उसने कहता है कि हमने फायर करना है, ट्रम्प उसके साथ झगड़ रहा है, पावल जो है आपका। Let's see if 85 is a good buy. Time will tell. हाँ, मिड बैंड देखे ना पहली, अब ये दूसरी रिट्रेसमेंट आ रही है, तो लेट्स सी। मिड बैंड आ रहा है आपका 85 पे आ रहा है, लेट्स सी पिक होता है कि नहीं। अब नैस्डैक पर डिपेंड कर रहा है, पिक हो गया। भाई अब एरिया से 83, ओ भाई नैस्डैक मुड़ जा, ओ स्टॉप लॉस कर हिट, बहुत स्पीड से नैस्डैक को वापस ले आए वो 515 S1 पे फिर जी। दैट मिड बैंड डिड नॉट, सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस सब तबाह कर गया। S2 हाई, प्रेशर वाज डाउन, 4 रिट्रेसमेंट दी एंड दिस मिड बैंड डिड नॉट वर्क। Because Nasdaq went back to test S1 in a rapid fire. अब सेल का बन गया जी। All right. Even it didn't stop 9. Wow. Let's see if Nasdaq goes back up. That will take ES back up. $6091. Foreign Nasdaq archer. Just keep an eye on Nasdaq. ये मिड बैंड चलता है कि नहीं, लेट्स सी। एरिया पे है टॉप, नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं चार्ट लगा देता हूँ। ये मिडमैन आपको दे रहा है अभी,
this mid-band failed as well. So 7.75 Nasdaq आज रुलाएगी जी सारों को. वो चैनल ते T20 लग गया, इधर टेस्ट लग T20 देखते हैं कि क्योंकि ਉਹਦੀ वॉलेटिलिटी इस वेले ਇੰਨੀ है क्योंकि वो 50 होने गया 550 तो सीधी 500 ਤੇ ਉਹ 500 ਤੇ आई 510 ਤੇ पूरे एरिया ते गई और फिर उधरों ਉਹਨੇ ES ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ देखिए ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ स्टॉप लॉस लाना ਹੁੰਦਾ है कि जस्ट इन केस 9 पॉइंट 4 पॉइंट जितने भी आपने लेने हैं मिड बैंड 8.5 अभी तक तो ठीक है, 1 पॉइंट दिया जी. नहीं आज उन्होंने सुबह ही कह दिया कि जस्ट प्लीज बी केयरफुल. या आज सिर्फ मार्केट स्टॉप लॉस खाने के. अच्छा बाय द वे एवरीबडी आउटसाइड कैन सी योर ऑर्डर्स, मीनिंग एवरीबडी कैन सी एवरीबडीज ऑर्डर्स. तो जो बड़े लोग बैठे हैं इनके बिलियंस ऑफ डॉलर है ना, उनको पता होता है कि ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं. उनको ये नहीं पता होता कि ये बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है, लेकिन उनको ऑर्डर्स बुक नजर आ रही होती है कि कहाँ लोग ज्यादा बैठे हैं. तो वो फिर उनका एल्गो डिसाइड करता है कि यहाँ लोग एग्जिट में बैठे हैं या यहाँ पर वो एंट्री में बैठे हैं. अब किसी का तो एग्जिट होगा, किसी की एंट्री होगी. तो वो आज वो सिर्फ घुमा रहे हैं हर एक का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए. दिस इज द डे वी कॉल इट बिकॉज दे कैन सी इट ऑल. दे लाइक if you have mute, that's called trailing. Somebody's trailing. I can hear it. I just put on. Okay. नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ somebody's trailing. That's a good thing. जो आपने बताया था ना उसको हाँ वो खुद चलेगा. बस अपना वो वॉल्यूम कर लीजिएगा प्लीज. Thank you. Thank you. No problem. It just gives you a chiching. देखें I had taken, by the way, that mid band, the short one, क्योंकि प्रेशर डाउन है. मैं वैसे ही सेलिंग का बंदा हूँ. 2 पॉइंट लिए बाहर आ गए. डन. So 1 trade done for today. Come on, I gotta stop doing this. No. It's just okay. एक ट्रेड हो गया. नहीं ऊपर लॉन्ग वाला, लेकिन शॉर्ट वाला ठीक है ना. Top of the bar. Giving a top low And hopefully somebody watched those videos that I made on how to trail your profits. That's pretty cool. And I will do the stop loss, bottom of the bar, one video. So because of this volatility, trends are changing crazily. Not recommended to trade.
तो उसमें आपने ना 10 टिक्स का था 10 टिक्स का था, लेकिन आपने जो वीडियो है ना उसमें आपने जो वर्ड बोला माइनस का, लेकिन आपने 11 लगाया वहाँ पे। एक ऊपर, ताकि एक ऊपर जाएगा तो 11, वो मूव 10 टिक्स ही हो रहा है, वो एक टिक ऊपर देख वो रहा है, 11 ही लगेगा। वो 11 ही है। तो 10 11 10 1 आप उसको, अगर आप 8 टिक्स पीछे आना चाहते हैं ना, पहला ट्रिगर होगा 9 पे। मुझे लगता है अपना इसके लिए अलग ही हॉटस्पॉट देना पड़ना है। This again mid-band worked. This was a not a gap trade, but it was a mid-band trade. लेकिन हाई लो से आ रहा था। Yes, थोड़ा सा नहीं, नीचे से, नीचे वाला, वो सॉरी नीचे वाला, एक कंडीशन मैच नहीं हो रही थी। Somebody also said yes, you can keep an eye on large triggers too, just to kind of see if that mid-band can be avoided, and that's a great point as well. I could ask a technical question. Somebody asked. My boss. Yes, yes. End of the day, yes. Last time.
मैं कुछ नहीं कर रहा। लोगों को भी नीचे तो 45% कम कर दिए। Sorry, guys. So yes, if there is a divergence, strength is better than BBs. So watch for strength. Because I had a question somebody asked me.
that if I'm looking for divergence, should I be focused on BBs or should I be focused on strength? So they say strength, so just a technical discussion. So of course I have to, still learning after 20 years. So never stops learning. Strength is showing the bottom one. Yeah, the bottom is the bottom. So that says, you know, if you were to have a preference, strength is always better than. So let's now go live on other platforms. Crude oil ki aa gayi news. All right, mid-band worked, guys. Gap, it is a solid gap trade. All right, now I will explain you guys how the new company works and how you can take an advantage. But let me put out my disclaimer. Doesn't matter the company we promote for any funded FTMO, Perdia, like Legends. Please note that we are not that company. We're not responsible. We just bring you these things to help you out so you don't have to invest your own money. So do your own due diligence, please. Company's been around, just like whatever happened to fast track trading. I don't want like complaints that, hey, whatever I explained, you guys should do your own due diligence. I know accounts are even $50 somebody loses, it's painful. So super start. Order नहीं पिक हुआ, वो एक टिक से रह गया, या लेकिन अच्छा गैप ट्रेड दे गया. So let's give you guys a full, since I'm not trading and if it's, I don't recommend anybody to trade. Let's talk about the new company. So, and we'll do a full comparison, so everything line by line and everything else. So, and anything I do, of course, I buy the accounts first before I recommend you guys. So, all right. I got twisted to this way. Too much, sorry. If anybody's watching it at home, is the board okay to clear to see? Because sometimes I'm not reading the messages. If anything I write, yeah, 50, yeah, 150. Why is it shaking? Why is it shaking? Give me a second. Sorry. Sorry. No, it's good. It's good. No, target 1500. Drawdown is 1500. What else is there? Ninja. Yes. Trader weight. Yes. What else benefits we have? EA is 7 days plus. PA is 10 days plus. What else? Target, we gotta make 1500. We can't lose 1500. Ninja is supported, trader weight, and of course,
DLL, daily loss limit, not here. And 430 is both. So time 430. Accounts, number of PAs, 10. They give you 10 PAs. What else can I think of when I promote? Now let's write, let me change this, move this. Of course, we do have Ninja. We do have Trade of It. We do have 430 and end of the day. Yes. PA, what are the rules for PA? PA, don't make, so 150 is a limit, the bottom limit, and 450 is a upper limit. So that's an upper limit. Trade for PA, trade for 10 days plus every time. So PA. What else do we have conditions here, sir? Yeah, PA key, I think. Actually, here the target is for PA. So let's write it this way. EA target is 1500. PA target is 2000. Slightly different. Anything else you can trade? News trading doesn't allow on both. I think we are, anything else I may have missed? Let me see that. Okay. It says, please put a little down the light. Let's do slightly light. Or, sorry? No time limit. In PA, there's no time limit. So PA, 10 days plus to infinity, right? So PA, you got to make $150 at least, and you got to wait 10 days to get a payout, right? And there's a payout limit of course, you get $1,500 maximum per account, right? So yeah. So just to go over legends, if you were to buy an account today, is $50 for a PA. You have to clear it in 7 days. PA, $150. You got to clear it in 10 days minimum, or that's the cost. EA target is 1,500. Per PA target is 2,000. There's drawdown means you can empty the account up to 1,500. You can lose 1,500. That's the word is called drawdown threshold. And of course, it works on Ninja. It works on Trade Away. Time is 4:30. End of the day. PA fees is PAs. They have rules. Don't make less than 150. Don't make more than 450. That's called the consistency rule. And of course, they have the same problem. Don't make more than 450 in a day for EA. And payout limits are. So there's a company called Take Profit. They reached out to us and they said, you know, we are in the space of funding company as well. And it's an old company, Take Profit. And they are into futures games. And they removed something called the daily loss limit. We weren't promoting them for a long time because of a problem called daily loss limit. You see, I wrote here daily loss limit, DLL. I wrote daily loss limit. There's nothing here, meaning that if you were in a trade negative, you have $1,500, you can go down to $1,500, then your account is gone. Apex has a trade loss limit. That's a completely different beast. That's why I'm not writing Apex here. So this company reached out to us and says, we want to partner with you, your super areas. You have 12,000 members. Send us some traders. So I write, okay, back and forth negotiation. And I bought 5 accounts. Now let's do one, like apple to apple comparison. EA here is $75. Same price. I'm going to do a 100% comparison on $25,000 account, which gives you a $1,500 threshold. So this is same on here. Your EA is $75. So there's a $25
difference in price. However, your PA is $130. You see, this kind of offsets each other. So $75 you paid. If you complete it in a month, your PA is 130. So you kind of save your 20 bucks right there. So you're down to -$5. So price is not that much of a concern, because here you paid a bit more, but you got your money back when you were doing the PA, a bit of 20 bucks cheaper. They allow you here. They allow you number of PAs is 10. They allow you only 5. PA max count is 5. They don't allow you to do more than 5 accounts. Okay, fair enough. Now their EA target, of course, is the same. EA target is $1,500. Their PA target is the same $1,500. So that's a bit of a better thing. So you start your EA 1,500, you start your PA 1,500. There's no extra 2,500 you get. Daily drawdown is full 1,500, meaning you can lose 1,500 and then your account will go. Just so far we are pretty same, except we have. So let's do a bit of a highlight on the differences. So you have a highlight here. This is slightly different. So I will do a highlight, because they allow you 10, they allow you 5. Of course, a bit of a difference in positives and negatives. Sorry. Of course, they works with Ninja, they works with Tradeaway, that works at 530. So it's the same, connects to your Ninja. So it is Ninja ready. So Ninja is ready, Tradeaway is ready, time is 4:30. I'm not gonna overwrite. This is where it gets a big difference when you're in the round 2. In round 2, when you make $1,500, first round 1, they said, you know, we're gonna make it easier. Complete it in 5 days. So you have 2 extra days to complete faster. So Legends is 7 days. Take Profit is 5 days. Take Profit says, I don't care how much you make. Don't make more than 9. What's the 1,500 divided by 2? 7. So don't make more than 750. So they just have a 50% consistency. So your max limit is 750. Over here, what's our max limit? 450. Over here, you have 7 days to complete. Here, you have 5 days to complete. You can literally complete 750, 100. Rest is same. We're comparing full apples to apples, 100%. Price versus everything else. The exciting part is once you go in a PA, so you start your PA, there is no consistency requirement. They lifted it. They said you can complete your PA in 1 day. Come to Take Profit, you have a PA. You want to make $1,000? Good for you. It's okay. We like you. Over here, no. Legend says no. 10 days you must. $150 minimum you must. $450 maximum you must. That's a condition. It's a company. I don't dictate the rules. I fight for you. They had a daily loss limit. We helped you remove. They had a live trailing threshold. We helped you remove. Another company came along, says, guys, at Super Areas, you have members. I said, you already giving me a deal I already have. So remember, when they fight, it's better finish for us. So I'm like, look at Legends. Why should I switch to you? I'm already getting the same deal. What makes you better? So they said, all right, how can we make it better for your students? Again, my disclaimer, they run away, not my problem. It's a new company, take your own risks, 1 PA, 2 PA. It's not hundreds of millions of dollars, but even $75 is an account. So now they said in EA, you can complete your EA within 5 days and you can make $750. PA, you will pay $130. And after your balance goes from 25,000 to 26,500,
you have $1,500. Once you have completed it, whether in 1 day, 2 day, 3 day, no limit, upper or lower, we will give you a daily payout. Anything above $1,500. So, you know FTMO, how they do it? So the moment you have done your PA full bracket, anything above $1,500, you can request daily. 90-10 or 80-20. I think it's 80-20, like per dia. So as you know, we have legends. Then we ask you to go to per dia, and then maybe FTMO, and then own money. There's a gap in between which this company is filling. It's a best of both model. Yes, a bit aggressive. You will trade without discipline. You will over trade. Here, Apex wants you to trade. Apex wants you to trade with high discipline. I'm going to know my profit. I'm going to know my loss. I know my SL. I know my TP. I'm the expert trader. Legends came and relaxed some rules, and then Take Profit came and relaxed a little bit more rules. So again, this is as close to your money that goes, but I think I have to read one thing in their thing is in PA, I think you'll go from end of the day to live trailing threshold. So that's maybe a bummer in the only thing there, I have to confirm that yet. But this is how the Take Profit company is giving you the accounts. It's $75 on EA, $150 on PA, and then different. So the benefit is the moment you get to $1,500, right? So I got their accounts almost 10 days ago. So let's log into my feed and let me show you what I've done so far. I bought their 5 accounts. Let me double check. सर अगला है नीचे गिर रहा है ना अभी तो हाँ नीचे आने दे S2 अभी दूर है जी और इधर भी S ये मिड बैंड चला आपका वेरी गुड यार all right so we have created a banner for you. The code is super areas. I moved it above legends on number 1 so like because it's slightly better and we're just doing some final talks with Tick Trader because a lot of people want a similar company like that. So we have a code coming for Tick Trader to give you 35%. So that's coming soon. So 475. Let me just. Huh? नहीं sir. Sir, 420 S2 refresh कर लें chart. नहीं मेरा S2 बोल रहा सर S2 okay no problem. All right, let me log into my Take Profit and kind of give you my progress of how am I doing so far. Moment. Profile. All right, so how would you sign up? I'll do a video, but it's pretty straightforward. The banner is right here. It's called Take Profit. If you click on that, it will take you to this website called Take Profit. Okay. So of course you log in, you put in the code super areas, will give you a discount, and the EA will become slightly, just click on accept all right here when you're doing it. The code is super areas. So this is how so this is called Take Profit, very close to Legends, but if you want to explore, you can read their rules. So let me log in right here with my account.
So I've logged in. I paid $75, just like everybody else. I don't get a special discount. I bought 5 accounts. You can buy 5 accounts. So I bought, because I put it on a copier. I always do them. I'm not individually trading all accounts. So these are my 5 accounts, right? And let's click on an account right here. Let's say this one. And here is, when did I start this? This is my key, everything else. So first trading date, January 15th. So when I was in the negotiation and talking to them, their support team and everything. So I started this account on January the 15th. That's why I'm very transparent on all the trades I do. Yesterday was the last trading date. So it's been what, 15? So it will tell you everything. So what was my target? It's a $25,000 account. Yesterday, I made $85 on it. All right, okay, good. 85. It's a small account, minis, micros, whatever. On 14th of February, they'll charge me another $75. So I have to finish it before it. So I have a month. Remember, 14th of January, I bought it. 14th of February, my accounts will get renewed. Tells you my license key. It's okay. I don't need a license. That's my account number. That's 5. My current account balance is $25,765. So I've made $765 so far. I'm pretty much halfway there. 1.2 point, 1.2 point. So what is my target? 26,500. That's good for Legends. That's good for Apex. That's good for any $25,000 account. My target is 26,500. So I'm done $25,765. So pretty much right in the middle, right from 1,500. Now it says that's a renewal date. And if somebody can see probably my password, I'm screwed. They can log in and I just exposed my password. Please don't trade my account. I don't want to lose 50. So it's gone live now. It sure sucks. Anyway, I've traded 8 days out of 5. So I traded more days, right? What else is there? $765 out of 1,500. That's there. My biggest day cannot be more than 50%. So in a single day, the highest profit I made was $157. All right. I don't have a limit, but they said you're only 10% of the biggest day. If it gone over 750, then it would be. So I'm within my threshold limit. So it says don't trade more than 3 contracts. So don't take 3 more than ES. Only close your trade at 5 o'clock. So maybe I still say 4:30, please. And don't let your account go balance too. So it's a live threshold. Out of 5 days, I traded 8. And I'm slowly building my profit target is this. First funding date. And you can close your positions right here. This is my graph. This is my daily journal. So day number 1, day number 14th of January, I made $0. 0, because I didn't trade. 15th January, I made $102 and I paid some commission. These are number of trades and quantities. Oh man, 14. So I got a $102 net, day number 1. Day number 2, $95. Day number 3, $152. Day number 4, $157. Day 22nd only was managed to make $5. It's okay. I went in green. It's not a big deal. Market wasn't behaving, or maybe I was trading Nike, because if I'm trading, I think 14 contracts, that means micro Nasdaqs or micro ES, and I got out at $5. January 23rd, look, then I didn't trade $57, 110. So out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 days I traded, I made $750. Okay. So here's my progress live, guys, on all my accounts, and you can go and check rest of the accounts. Right here is rest of the accounts right here. So you're able to take a look and everything else right here. Same in this account. I think one day yesterday the copier wasn't working, and yesterday I made in one of these days slightly less, but the account balance is within that. So once these will go into a PA,
again, my struggle starts. I gotta get to $1,500 rather than 2,000. So that's less. I don't have to worry negative minimum 150. I don't have to worry 450. So these guys remove those rows. And I could make $1,500 in one day and finish it. So PA, meaning PA qualification to get a payout is done. So the moment 25,000 begins to come to 26,500, my thing is done, right? So basically, can do it in one. I can do this in PA one day. one. Correct. So EA 5 days, PA $1,500, but they will not give you that $1,500. Please remember, anything above 1,500. So if you made 1,500, that becomes your standing ground. Meaning, so your account is not dead. They do it slightly different. They don't want you to withdraw anything below. Yes. क्वांटिटी 3 हो गई एक ट्रेड के अंदर, तो आप एक से भी $50 बन जाते हैं। तो दो, अगर आप माइक्रो कर रहे हैं तो 30 हो जाएगी, क्योंकि माइक्रो है ना, MNQ है तो 30 हो जाएगी, MES है तो 30 हो जाएगी जी। तो ये टारगेट है। 25,000 का दूसरा अकाउंट शुरू होगा PA वाला, और PA को अगेन जाके मैं एक ही दिन में 1500 कर लिए। उसके बाद जितना ऊपर कमाएंगे रोज का रोज निकाल सकते हैं। वाइस पर डिया वाला वाइस राइस एक टाइम फी है $150। वो तो फीस तो सेम है, एक्टिवेशन फी चार्ज करते हैं, वो तो सेम है, क्योंकि उन्होंने एक मार्केट में compete करना है ना। सो ये देखें उससे, हाँ जी क्या जी, फीस वन टाइम, लेजेंड में भी वन टाइम है, इसमें भी। अब देखें, लेजेंड से मैंने कुछ बेहतर ही लेके आना था ना, नेगोशिएट करना। अगर कल मुझे इससे भी अच्छी कंपनी मिल जाए, मैं उधर चला जाऊंगा, मुझे इसमें क्या, लाइक आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ ये कि आप लोगों के लिए फाइट करना है बेस्ट कंपनीज को लाने के लिए, जो हमें इस वक्त तक एपेक्स हमने 2 साल पुश की, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेजेंड्स वाले आए, मैंने कहा भाई मुझे एंड ऑफ डे चाहिए। ग्रेग से फोन पे CEO से बात हुई, ऑलमोस्ट 3 मीटिंग्स हुई सारी, के भाई मुझे एंड ऑफ द डे चाहिए, मुझे नहीं देखना। क्यों? एपेक्स में मसला ये था, 200 देखा, 100 पे बंद किया, 100 पे मुझे इश्यू आता है कि यार ये तो लाइव ट्रेडिंग नहीं होती ना। अभी भी एपेक्स वाले बकवास ये है, क्योंकि रियल में ऐसे क्या है, रियल में तो ऐसे नहीं होता। आपने 200 देखा, 100 देखा, 100 तो जेब में आ रहा है ना। एपेक्स कहता है नहीं, 200 देखा है, 100 तो मैं दे दूंगा, लेकिन 100 काटूंगा भी। 15 वो जो ना आप गिरते रहते हो। लेजेंड्स आया, बहुत अच्छा रहा, लेजेंड्स ने हमें 4 माह निकाल दिया। नहीं, इसमें इनके EA में नहीं है, लेकिन PA में 1500 के बाद खत्म हो जाता है। जिस तरह एपेक्स में भी लाइव थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है ना, उन्होंने PA में एक थोड़ा सा रखा हुआ है PA के अंदर 1500 तक। हाँ वही वाला 100, तो आप लिमिट लगा के निकलें, 70, 80, 90 निकलें, लेकिन एपेक्स से बेहतर है। EA में नहीं है, PA में है, लेकिन कहां तक? 1500 तक। और एपेक्स वाली कंडीशन नहीं है कि यार हमें 450 ट्रेड के अंदर लॉस ना हो। एपेक्स से तो बहुत बेहतर है, मीनिंग लेजेंड से भी ये 4 गुना हाथ आगे ले गए हैं। कि लेजेंड्स में वो कहते हैं यार आज ही 750 बनाओ, हेडेक कोई नहीं, बना लो निकल जाओ। और जब PA में आ जाओ 1500 बना लो, उतना छोड़ दो अकाउंट के अंदर, और फिर आप रात को 500 बनाया, सुबह 500 निकाल लिया, कोई उनको परवाह नहीं है। पर डिया का छोटा, लेजेंड से ऊपर। मैंने कहा ना, एक गैप क्रिएट हुआ था लोगों का कि हर एक कंपनी आएगी बेटर से बेटर करेगी, जो हम ट्रेडर्स के लिए फायदा। हमें तो फ्री का कैपिटल है ना, निंजा पे चलता है, ट्रेडोवेट पे चलता है, दिस एंड दैट। एंड hopefully the guys who are watching on live stream can zoom into my username password. If you guys I had this happen. I exposed my EAs on my Apex, and somebody started trading them, because you just need a username password to trade. It's okay. So there's guys out there, because this stream is going publicly, and they will log in, and you can no आप पासवर्ड ट्रेडोवेट का चेंज नहीं कर सकते। एक दफा लग जाए तो वो बड़ा मसला है। तो I'll try to log in and see if I can change on, but that's why I don't generally expose. And if you guys want to see bull knocks, why I can show, it doesn't have my password shown. I'll quickly show you my bull knocks. So go on superareas.com, because why I bought these accounts. Let me show you bull knocks account. There's a banner here, and I'm, like I said, I'm trading like well over or let's see,
All right. Okay. So these are my 11 Bullnox accounts. I paid how much? $16. Why I went with Bullnox? Renewal was 16 bucks. You know, they had a great sale. So you buy a $50,000 account for $16. Next month is only 16. Apex said first account 16, second account $33. Right? So I didn't want that. So here's my Bullnox accounts, 11 of them. And here's my report for them. So if I click on these reports, let's say account number, I blew one, so I have account number from 2 to 12. So because I didn't know if they had live trailing threshold. So when did I buy? I bought this. Let's look at the billing. When did I buy these accounts? I bought them on January 2nd. January 2nd. On February 2nd, in about 2 days, 3 days, they will charge again. How much? $16. It's okay. It's bearable. It's affordable. So I bought, and they are allowing you. So how much was my target? Why did I pick this account? This was the cheapest. So how much they started my account balance with what? 50,000. They said you have 2,500 threshold. All right. What is my target? 53,000, 3,000. How much is this? So they're slightly different company. They work with Rhythmic. They don't work with Trader Weight. They work with Ninja, but this is my on February 2nd. They'll charge my credit card again $16 if I don't complete my target. Now here is my report card for this, and I've posted all my report cards. So this is one account, and how much am I done? $2,512 I have made. And how many days I have traded? It says 12 days. So in 12 days, I made $2,500 per account. Remember, I'm dealing with Apex. I'm dealing with Bullnox. I'm dealing with Top Step. I'm dealing with my funded futures. I log into next my funded futures, and I'll show you these two. So anybody doubting, oh, he doesn't show his accounts. These are my live accounts. You can take a look. I've shown you my FTMO. I've shown you all of these accounts. So I'm very go and like look at our FTT. I was posting daily. This is what I made today. And I got the $50,000 payout approval. So here's my account balance, 2512. Yesterday I traded and I made $187. And I still have a full threshold. You minus this. You don't have to do our trader. With this, you can do live here. This is my graph as my profits are going up, and then a daily graph. So this is my daily graph. So yesterday I made after commissions on 28th $174. Then I made on 23rd I made again 107. You know what is that showing you? I'm going for 4 points, 3 points, maybe area on Nasdaq, right? So this is the progress card. Now I have to make $500 and I only have a couple of days. I may not be able to complete. It's okay. I'll just do an incomplete and I'll do a carryover. So all of this, my credit cards will get charged again. $16 times 11, $180. Okay. Now I have full 30 days again. I have 30 days. I have to make $500. So my target went down from 3,000 to $500 I have to make, and I can lose full 25. You see how the balance kind of got in my favor? So as you work towards your goal, I only have to make $500 and I can lose 2,500. It's a great ratio. I started with opposite. I had to make 3,000, but I could only lose 2,500. And this is a difficult game. You know why? This is live trailing threshold. So that's a slightly different thing. So this is Bullnox. So Bullnox is 11. Then I have Legends, which is ready for payout. 10. Apex, 300K, 20. Then you have My Funded Futures. That's 3. Then you have Take Profit. That's 5. Then you have Tick Trader.
that's 5 or 7. Tradeify allows you 5. Perdia 1. And my own GFF 1, it's an AMP futures now. GFF 1, what else? My interactive broker is stocks. Forex.com is CFDs. So that's so Forex.com, Wealth Simple, and interactive broker. That's a different batch. That's real cash account. GFF is but futures too. So a little bit here, a little bit there, a little bit here, 20 points here, 30 points here, 10 points here. It adds up. So if you were to take it 11, 10, 30, 20, 40, 50, that's 60 or 70 accounts. I still am missing like 5 companies more. So you can have 100 accounts, but remember, if you are paying $50 a month on 100 accounts, that's gonna add up. So please, that's $5,000 a month, just the EA's fees. So don't get excited, number of accounts. Just do 1 or 2 or 3 or 4, and then once you will get the payouts, it will fuel all of them, right? So Perdia, whether I trade or not. So this is the performance for my Bullnox. I only need to make $500 while I have a full threshold of this. I've shown you so let's log into my funded futures, another banner. And I pay the same fees as you guys do. So click on, I think at the bottom, I don't have my funded futures banner. So let's log into my funded futures, another prop firm. So you can have 1,000 accounts, that's irrelevant. You need to know how to trade first. So that's the important part. But what I always say on the radio, there's so much capital sitting outside, you don't have to worry about. Give me a second. So why am I talking like this today? Because of give me a second. Just checking nobody has traded, right? Gotta keep being in my open positions. No, I'm always once that Apex PA somebody was trading, I was like, come on, man. Because I did a screenshot, right? And at one point, my username and password got exposed because I was doing it. Okay, you do this, you do this, you do this. So, and then I'm like, my PAs have some threshold gone, not too much. They tested it, and then I caught it. But the idea was, it's people. Give me a second. My funded futures. So another company that I'm about to show you guys about. Okay, there's no email here. So I bought the same accounts with somebody. Jay recommended it. This is a good company. I'm like, all right, let me give it a try. They only allowed 3. So how much? Let's look at the billing. Look, I bought these accounts. I didn't know a code, but this is the most expensive. Don't recommend it. It's very costly. EA alone is $100. So I bought 3 accounts, and I bought them on January the 3rd, and I bought the $50,000. On February the 2nd, these will get charged again, $76, $101. So remember, $300, that is coming up. So I got to finish them, right? So where's my progress right here? It says stats. And so far, what is my target? 3,000. How much I can lose? 2,000. Even more difficult, right? Because it's not 2,500. So in my days, I'm up to 2,000. So now I just gotta make 1,000, and I can lose 2,000. But remember, if I lose more, I gotta remake that. So because my threshold, but I have an ability. So this is my balance, 52,000. And my profit target is this, and that's my minimum. Now it says your day is gonna finish in 6 hours, 50 minutes, and my equity is there. Here's my stats for the whole month. Sorry, ES area हो गया? ठीक है, आज तो मैं वो ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो वहाँ कहाँ से slip हो जाए, dot पे लगी पूरा. 73 अच्छा मिस हो गया आप कह रहे हैं. ओके देखें, डे 1 $228, डे 2
आप कहोगे यार सिखा रहा है, हजारों के ट्रेड क्यों नहीं कर रहा, लाखों। ओ भाई मैं छोटा छोटा डाल रहा हूँ, 80 अकाउंट में डाल रहा हूँ। ये आसान नहीं है काम। रेदर देन मैं बैठूं कि एक ही बड़ा ट्रेड लूं 10,000 का, वो भी ठीक है। forex.com में इंटरैक्टिव, वो डिफरेंट कंपनी है। इन कंपनियों का रूल ये है, यू गो स्लोली, एवरी डे अपना नेस्ट बिल्ड कर रहे हैं। बीवर भी इतनी देर में बीवर डैम बना लेता है यार। देखें ग्रीन है $228, $254, $157, $185, $110, $109। और भाई 2 दिनों में तो सिर्फ ट्रेड में टाइम नहीं लगा, एक एक ट्रेड लगा माइक्रो का। मैं भी $56 लेके मैंने कहा ठीक है बंद हो गया। लाइक मुझे क्या है, कल भी तो आना है। मैंने कल क्या नहीं आना। $140, 1 2 3 12 दिनों में 2000 इधर डल गया, 3 अकाउंट में डल गया, 6000 ये हो गया। अब आपकी रिपोर्ट देख लें, अगर आपने हजारों डॉलर की रिपोर्ट लेनी है ना, तो 12 दिनों में बुल नॉक्स में 2500 डल गया। तो 2500 को मल्टीप्लाई करें 11 से। ये अगर आपने रिपोर्ट कार्ड मेरा निकालना है तो पूरा निकालते हैं 2500 टाइम्स, क्योंकि एक छोटा छोटा सी ऐड हो रहा है। ऑलमोस्ट $23,000 का प्रॉफिट ये हो गया। ठीक है, अभी मैं एपेक्स में लॉग इन करूंगा और आपको 3 लाख के अकाउंट दिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूं। हर अकाउंट में $10,000 हुआ है। तो ये क्या बना, 10,000 टाइम्स 20, 2 लाख का। ये भी तो मैंने ही कमाया ना, और किसी और ने तो ट्रेड नहीं किया। इसको भी अगर उस तरह ऐड करना है तो पूरा ऐड करेंगे ना। तो 2 लाख का ये प्रॉफिट हो गया। 10,000 मैंने कमाया अभी तक एपेक्स में, 20 अकाउंट है तो 2 लाख हुआ। आगे आ जाए माई फंडेड फ्यूचर्स में, तो 2,27,500 तक तो हम आ गए। उसके बाद अगला आपका अकाउंट आ गया, 3 ये आ गए, 2 2 4 6,000 ये आ गया। ठीक, उसके बाद आप टेक प्रॉफिट में आ गए, उसमें हमने हर एक में 700 बनाया, तो $3500 ये आ गया। It is incredible amount of money by doing so little effort. एफर्ट मेरी एपेक्स में बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखेंगे एपेक्स में मैं 500 डे कर रहा हूँ। 500 डे का मतलब मैं 2 लाट से या 1 लाट से लेता हूँ, तेरा पॉइंट ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। 2 ट्रेड लिए 250 के या 1 ट्रेड, मेहनत मेरी उतनी ही लग रही है। आप देखेंगे कई दफा कॉपियर चल रहा होता है, कॉपियर क्रैश हो जाता है, कहता है मैं 40 अकाउंट नहीं कर सकता भाई, 10 करूंगा, 5 करूंगा, 8 करूंगा। तो हमने दोस्तों में क्या हुआ यार, 10 अकाउंट तक ठीक रहता है, कॉपियर तंग नहीं करेगा। उसके बाद ना वो कॉपियर डिफरेंट ट्रेड उठाना शुरू कर देता। आपने कहा 6101, बाय द टाइम 80 अकाउंट तक पहुंचा। वो एक टाइम पे मैं पागलों की तरह 250 अकाउंट कर रहा था। वो 250 अकाउंट में कॉपियर, वो जब तक 250 अकाउंट पे उसने सिग्नल भेजा, वो सिग्नल ही निकल गया। राइट, सो कॉपियर 10 से 12 तक ठीक रहता है, नो प्रॉब्लम। सो एंड ऑफ द डे ये दिखाने का मकसद ब्रैगिंग नहीं है यार। जो मैंने कमाना है मैंने ही कमाना है, जो आपने कमाना है आप ही ने, ना मैंने आपसे कुछ लेना है ना कुछ देना है। आपको टीच कर रहे हैं भाई, ये प्रोग्रेस है। आपके सामने उस बंदे की स्टडी भी डाल दी, ये भी डाल दी कि रोज के 200-250 की पावर देखें, 2 पॉइंट की कितनी पावर है। टेक प्रॉफिट आधा हो गया। सो बर्डिया भी है साथ, काफी सारे अकाउंट चल रहे हैं। एंड हाँ, कॉपी देखिए हो ये रहा है कि देखिए आज मैंने एक ट्रेड डाला, सिर्फ एपेक्स पे डाला। ठीक है, मैं आज का ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने बाकियों पे कहीं कॉपी ही नहीं किया, लेकिन हर ट्रेड मेरा एपेक्स वाला जो 20 कॉपी हुए ना, उसके अंदर मुझे 2 पॉइंट मिले $100 और सारों पे हो गया। तो मेरा अटैच करके रखे हुए। तो जिस वक्त मेरे पास 4 कॉपियर की विंडो खुली हुई है, ये नीचे कॉपियर है, टेक प्रॉफिट का अलग कॉपियर है, मीन कॉपियर एक ही है, उसकी एक विंडो खुली हुई है। अब मैं रेडी हूं भाई, सारे लाइंड है। अब मैं टेक प्रॉफिट की तरफ जाऊंगा, अब मैं माई फंडेड फ्यूचर की तरफ जाऊंगा। अब मैं नाउ पढ़ दिया, वो तो अकेला ही चलता रहता है, नास्डैक माइक्रो में घूम फिर के आके कुछ ना कुछ दे ही जाता है। तो आइडिया ये नहीं है कि मैं 80 अकाउंट इकट्ठे चला रहा हूं। मैं चलाता हूं कि यार इसका टारगेट पूरा हो गया, अब मैं अगला मिड बैंड या अगला एरिया या अगली, और रूल सेम है। तो कुछ दिन ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, लेकिन आप 200 से 250 या $150 का भी टारगेट रोज रखें, 100 का भी रखें, आप 3 माह में कहीं पहुंच जाओगे। ये और मैं आपको आज भी बताऊं, 10 दिन ठीक चलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जहां आपको 375 का लॉस लेना है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप क्योंकि आप, लेकिन उस दिन बंद करना भी तो आपको एक बड़ी चीज है ना। So this is how, these are all my accounts and everything else. You guys can go and look at it, no problem.
Let me see if I can log into my Apex to show you the progress for Apex. इसमें लाइव थ्रेशोल्ड नहीं, थ्रेशोल्ड आता है Apex में. Give me 1 second. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली. Apex जी ठीक है, मैं आपको दोबारा, हाँ जी, मैं कर देना एब्सोल्युटली. हाँ जी, हैं? हाँ हाँ, मैं वो मुबारक दे सकता हूँ, अफसोस नहीं करता मैं प्रॉफिट वापस देने कोई मुबारक, मैं सिर्फ कहना है कि आई डोंट नो. सर 250 के बाद आप ट्रेड कर रहे हो, इंटरेस्ट डे वाले ट्रेड कर रहे हो, फिर तो बनता है लॉस लेना यार. मैं कहता हूँ बनता है. ये नैस्डैक आप सर्कल से बाहर आके 250 ले गए हो और फिर चोर आ गए हैं लिविंग रूम में, आप सर्कल से बाहर थे. हाँ जी, मैं कर देना सर, 1 मिनट दो बस, कोई गल नहीं, एब्सोल्युटली. I'll just take a screenshot here. All right. नहीं कम हुआ था, मेरा ख्याल है कम हुआ. उसका लड़ाई है उसके साथ. लेकिन ये बंदा जो है ना, ये बंदा इसको पसंद नहीं करता ट्रम्प को, मेरे साथ. ओके जी, ये है एपेक्स चल रहा, ठीक है. एपेक्स का अकाउंट खरीदा गया था सेम टाइम पे $16 का, जब वो 16 की सेल लगी थी. रिन्यूअल इसका $33 है, ठीक है. तो अगर आप ये देख लें कि ये सारी डेट शो कर रही है 28 की कल तक की, और ये शो कर रहा है कि मेरे पास PNL क्या है. इस पहले अकाउंट में मेरे पास 8,000 है, दूसरे अकाउंट में कॉपियर से लगे हुए हैं ना 3 लाख वाले अकाउंट. मेरा टारगेट क्या है, $20,000. अब मुझे 20,000 कंप्लीट करूंगा तो मैं राउंड 2 में जाऊंगा, तो मुझे लिमिट लगा के चलनी पड़ती है सारी. तो मेरे पास पूरा थ्रेशोल्ड मेरा पूरा 100% है, मीनिंग के इस अमाउंट में से इसमें निकालूंगा तो मेरा अब मेरा 1 मंथ तकरीबन हो गया है. अब मुझे मेरा ये टारगेट था कि मैं 2 मंथ्स में 20,000 हर अकाउंट में कर लूं. ये 4 लाख का ट्रेड बनता है. 20 अकाउंट टाइम्स 20 4 लाख बनते हैं. ऐसा लाइक एग्जाम आसान नहीं है. लाइक मैंने वो FTMO वाला 2 लाख वाला भी किया हुआ है. वो 2 लाख आपने बनाने, 30,000 आपने बनाने होते हैं, पहले 20 और प्लस. तो सारे एग्जाम्स स्ट्रैटेजी सेम है भाई. वो वाले होते हैं मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से करूंगा. forex.com में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है. इंटरैक्टिव ब्रोकर में स्टॉक्स हैं,
own a little bit, थोड़ा और वेल्थ सिंपल में ऑप्शंस हैं, हर एक प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन मैं चार्ट खोलता हूँ एनवीडिया का मैं इतने से रह गया, मैंने ऑर्डर लगा के कैंसिल कर दिया। एनवीडिया 118 पे आई थी, मैंने ऑप्शंस खरीदे कि 130 तक जाएगी फ्राइडे तक, कल मैंने रात को ऑर्डर लगाया, पता नहीं क्या फीलिंग आई, मैंने कहा शायद नीचे गिर जाए, और चार्ट से बाहर थी, मैंने कैंसिल कर दिया वेल्थ सिंपल का। अभी आप वेल्थ सिंपल का ऑर्डर दिखाता हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लेके कैंसिल कर दिया। मैंने कहा यार इसको अगर और गिरने तो, डॉलर का लिया था एक, वो इस वक्त वो $126 पे रातों रात चली गई, वो मेरा लाइक $3-4 बन जाना था, लेकिन जो किस्मत में नहीं है और जो वक्त से पहले है वो नहीं मिलना, बात खत्म, तो कोई उसमें रोना नहीं है। सो 8,000 पर अकाउंट बन चुका है, मेरा आधा टारगेट खत्म हो गया ना, मैंने इसको रश करना है। आज मेरा अकाउंट सिर्फ $100 देके गया है। यस, एग्रेसिव खेल सकता हूँ बहुत बार, लेकिन मेरी जॉब कोचिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, एनी डेस्क भी करना है, कॉपियर की डेवलपमेंट भी है, तो मेरा फोकस खाली ट्रेडिंग में नहीं था। यहाँ आने से पहले सिर्फ मेरा फोकस ट्रेडिंग पे था, अब जरा मुझे ध्यान से ट्रेड लगाना पड़ता है। यहाँ पर खड़ा था, हमारा इंटरनेट डाउन हुआ, पता नहीं आपके आने से पहले, एटलीस्ट लास्ट ईयर एपेक्स के पीए चल रहे थे, एग्जैक्टली न्यूज टाइम पे इंटरनेट बंद हो गया, एग्जैक्टली उस मैं 5 माइक्रो नैस्डैक में था और वो न्यूज पे वो गई, एपेक्स अलाउ करता था उस वक्त न्यूज ट्रेडिंग, एंड देन आई लॉस्ट एन अकाउंट बिकॉज मैं यहाँ कोच भी कर रहा हूँ, देन आई गोटा गो एंड लुक फॉर माय अकाउंट। सो बैड स्टफ हैपेंस टू ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माय सेल्फ। मैं कोई यानी कि बहुत परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूँ, सिर्फ आई नाउ नो कि यार डिसिप्लिन से आगे जाना है, मेरी नॉलेज से आगे नहीं जाना। तो ये है मेरी प्रोग्रेस एपेक्स के 3 लाख की अकाउंट की। यहां से उड़ जाएंगे, ना आपका कसूर है, ना गॉड का कसूर है, ना मेरा ही कसूर है। आपने अभी मुझे कहा मैंने 250 बना लिए थे, पता नहीं मैं ट्रेड में क्यों बैठ गया। ये अब सस्ता सीख रहे हैं, मैं ऑनेस्ट टू कहूं, 2-3 साल पहले जब तक ये निंजा नहीं था 8, आप एक ट्रेड को 4 दफा सोचते थे, पता क्यों? रियल पैसे थे, आप देखते थे, और डैनियल यहाँ पर वाक करते थे, भाई ग्रीन है, सेल क्यों किया हुआ है? याद है निंजा 7, या हिम्मत नहीं होती थी किसी की गलत ट्रेड डालने की, क्योंकि लेकिन वो सीखना भी मुश्किल था। आपको लाइव में जाने के लिए 3 माह से पहले देते ही नहीं थे, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद एक निंजा का यूजर नेम पासवर्ड खुद ही आ जाता था। हमने उसको निंजा 7 में डाला, ट्रेड किया, देख डाइवर्जन सीखते देखते 6 माह गुजर जाते थे। अब तो इतना आसान है भाई, आप $50 डालो, 16 डालो, दिल खोल के खेलो, लेकिन ये भी तो एक मेहनत है ना। ठीक है, यहां मेरा नुकसान कितना है, चले वैल्यू नुकसान की लगाते हैं, 16-20 $320 का नुकसान है मेरा। पता कितना टाइम जाया हो गया? 28 दिन जाया हो गया। अब वैल्यू टाइम की है, मनी की उस तरह नहीं है, क्योंकि देखें अब यहां से मैं गिरा, मैं जा सकता हूं, अभी 5 लॉट 35 लॉट देते हैं आपको, उनकी टेम्पटेशन देखिए, 35 लॉट लिखा हुआ है। अब 35 लॉट का मतलब है कि $1 मूव हो ना, तो 35 टाइम्स 50 बनता है कितना? $1750 मिलेंगे। तो $1750 आप कहते हो यार ये तो मैं 2 दिन में फिनिश कर सकता हूं। यहां पर बैठ के गुरविंदर जी ने ये सारा एग्जाम एक 90 मिनट में फिनिश किया हुआ है। उन्होंने $4 लाख 90 मिनट में किया हुआ है। यस, लेकिन हर लॉट 15 से 5,000 आ गया, 8,000 आ गया, 6,000 आ गया, 12,000 आ गया, और फिर जा भी उसी तरीके से रहा है। तो आइडिया ये है कि मुझे मेरा पता यार कि मैं 2 से 3 पॉइंट का तो कैपेबल हूं, अगर एक अच्छा मिड बैंड आ जाए, अच्छा एरिया आ जाए। सो दिस इज माय प्रोग्रेस, एंड ट्रस्ट मी, आई विल कीप टेलिंग यू वन थिंग, if you don't take the discipline seriously, I don't care how much money you have and how much talent you have. This game, this business is 0% indicators. 0. Yes, they help you. Okay, I will buy here, I will sell here, gives you the highest probability. Indicators don't matter. Charts don't matter. Support and resistance. What matter is where do you take your profit and when do you stop? I have to stop. Like today is, we are keep telling you today, don't trade. Market is going to go crazy. Go crazy. अब मैं कहूँगा यार मैं तो 20 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ये क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में, मेरे इस 4 लाख की कोई वैल्यू नहीं है यार। ये मैं ब्लिंक को बनाया जा सकता है, सारी मेहनत, पैसा जाया होगा $300, पैसे की परवाह नहीं है। टाइम मेरा 28 दिन इधर चला गया,
फिर बुलनॉक्स में भी खराब कर। अब मैं क्या रिवार्ड देख रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊं, ये जब 10,000 20,000 हो जाएगा ना, ये मेरा 28 दिन लगे। अब मुझे क्या इसका, मैं किसी चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं ना। अब आप इसका मैथ देखें, मैंने मंथ नंबर 1 लगाया और मेहनत की और अपना ईए 50% कर दिया। मंथ नंबर 2 लगाया, ईए की अपना 50% कर दिया। ठीक है, अब पहले कॉस्ट और टाइम भी तो लगाएंगे ना। यहां मेरी कॉस्ट आई $300, इन सारों का रिन्यूअल पता है कितने का, $35 का। तो $700 मेरा वो भी लगना है, 1000 इनकी सारों की 85 टाइम्स 20, $1700 मैंने ये भी देना है। $2700 अगर आपने कॉपियर भी खरीदा हो। अब आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है, अब छोटी अमाउंट नहीं रही, 3000 तक मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इन 2 मंथ में। ठीक है, लेकिन इसका पे आउट कितना है, $70,000। एक अकाउंट में से उन्होंने मुझे देना है $3500, क्योंकि जब मैं पहला मेरा टारगेट है 2000 का, 20,000 का, दूसरा मेरा टारगेट है 7600 का। जब मैं इनको ये करके दिखा दूंगा कि ये कितना बना, तो $27,600 जब हर अकाउंट में बन जाएगा, फिर वो मुझे कुछ पैसे देंगे। एक अकाउंट का $3500 देंगे। मेरा क्या गोल है यार, ठीक है यार, 2 माह लग गए, 2 माह, अगर मैंने 2 माह में 20,000 किए, 2 माह में 20,000 किए, तो 1 माह में मैं 10,000 कर लूंगा, उसको भी डिवाइड कर दो। 2 माह ले लो यार अपना पीए कंप्लीट करने के लिए, एक ना लो। मैं बिगर पिक्चर देख रहा हूं ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यार अगर अप्रैल में मुझे कोई गारंटी दे रहा है कि तुझे $70,000 मिलेगा एक फर्म से, और तूने करना सिर्फ यही है 250, 250, 200, 300, 250, 500, जी मैं इतनी मेहनत लेके, मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं कर रहा, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, 9 से 11 काम करता हूँ, तो इतनी इन्वेस्टमेंट 3000 के पीछे 70,000 यार। सो एंड में रिजल्ट क्या है, 99.9 डिसिप्लिन है। बाकी अब मैं 100 बन गया है, मैं कहूँ यार आज का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, या 350 लॉस हो गया, इसमें मैंने अपना टारगेट -1000 रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास 7600 है। -1000 गया, आई डोंट केयर, आई एम गोना गेट आउट। या +500 हो गया, अब मेरा आज 100 बना है, 11-27 हो गया, इंटरेस्ट रेट आना है, कल रात को अर्निंग्स हैं, परसों मैं शायद कोई भी अकाउंट अब मंडे तक ट्रेड ना करूं, क्योंकि यार ये तो किसी जगह नहीं लिखना कि मैंने हर रोज ट्रेड करना है। यार अब मार्केट की सिचुएशन के साथ है, मेरी रेंट जरा लंबी हो गई है, लेकिन ये मैंने अब आपको खोल के दिखाता हूँ यार अपने अकाउंट्स के। एपेक्स में ये बना हुआ है, बुलनॉक्स में ये बना हुआ है, पर्डिया में ये बना हुआ है, सारे आपके सामने है कि भाई वो भी उसी तरह ट्रेड कर रहा है जो सिखा रहा है। और मेरे अगेन कोई, आप माई फंडेड फ्यूचर खोल लो यार, कहाँ मैंने $1000 डेली बनाया है, ये देख लो, कहाँ आपको लगा कि मैंने बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। मेरा कमाल है छोटा, राइट। तो वो क्या कहते हैं शाहरुख खान, जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ कर जाते हैं। कुछ भी नहीं करना उन्हें यार, तो सिर्फ थोड़ा सा $100 डालना है, 250 बन जाते हैं रोज के, 200 बन जाते हैं, 50 बन जाते हैं। उसकी पावर ऑफ मल्टी, यस 3 साल पहले ये गेम नहीं थी, आप ज्यादा पॉइंट ढूंढ रहे थे, मे बी 15 पॉइंट्स, 10, क्योंकि एक अकाउंट था ना, एक रियल लाइव अकाउंट था, तो आपको होता था यार मैंने पॉइंट लेने हैं तो 15 पॉइंट तो लूं, या एटलीस्ट अगर 250-300 का, तो हम रेडियो पे ऐड क्या देते थे जो अभी भी चल रहा है कि यार आपका 100 बन जाएगा। इतनी बुरी हालत नहीं है कि 2 पॉइंट ना हम दे सकें आपको सॉफ्टवेयर, तो 100 बन जाएगा। तो अब तो 100 तो सर, ये 200 टाइम्स 3, $600 ये पड़ा है, 100 टाइम्स 20,000 वो पड़ा है, हर तरफ फ्री कैपिटल है। आप जाओ, इसकी एडवांटेज लो, एंट्री ठीक कर लो, प्रॉफिट खुद ही ठीक कर लेगा। और ये बार बार मैं कहता हूँ, भाई ने लगाया ट्रेड, 250 बन चुका था, अब मुझे नहीं पता क्या चीज देख के ट्रेड लगा दी, एरिया लगाया किसी 2 लॉट के साथ 1500 के अकाउंट में 2 लॉस। मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ, अफसोस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अफसोस का मुकाम नहीं है, ये मुबारक का कि आपको अपने पे इतने कि ओ नहीं सर, 2 लॉट दे नाल 1500 ਦੇ अकाउंट ਦੇ 2। अच्छा मैंने नहीं पता,
हाँ नहीं, मैं ਜਦੋਂ 250 वापस करते ना ਹੁਣ नहीं कर रहे ਤੁਸੀਂ समझ आ गई ना, नहीं कर रहे ना, क्योंकि पहले 250 तो बाद सर नो, मैं ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ नहीं उड़ा रहा, मैं सॉरी ਗੱਲ ਉਦਾਂ कर दी, फिर मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ भी होवे, that's all I can say, you know, कि जो मैं रोज पिट पिट कह जाता हूँ आपने 100 बनाने या 15 दिन में एग्जाम पास हो जाएगा, आप याद रखें 1000 साल मार्केट के अगेंस्ट खेलेंगे ना, आपका नुकसान होगा इवेंचुअली। फिर आप 4 गालियां देंगे, यार सॉफ्टवेयर नहीं चलता, राफे की टीचिंग खराब है, डैनियल नहीं, और इंडस्ट्री सारी खराब, और उसमें ये नहीं पता। और मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बंदा आ जाता है, मुझे कहता है यार नहीं चला, मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्ट के अंदर मार्कर जोन कर दिए, 70 ट्रेड 80 ट्रेड, मैं कहा यार कमान यार डोंट डू दिस, इसको ये तो कंप्यूटर ग्रीन तो लिख लो, ग्रीन में शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट में लॉन्ग किया हुआ है, जहां से दिल आया नैस्डैक ले रहे हैं, जहां से दिल आया ईएस ले रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे 12,000 हमारा ट्रेडर है, आज भी ओपन क्लेम मेरा और डैनियल का है, हमारा सॉफ्टवेयर लिया है और कामयाब नहीं हुआ ना, तो मैं आपके चार्ट के अंदर से रिजल्ट्स निकाल दूंगा कि भाई कसूर आपका है, आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। मैं डिसिप्लिन सिखाने के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं मैथ सिखाने के बिजनेस में हूँ, तो डिसिप्लिन के लिए ब्लूटूथ डिवाइस आएगी आपको, या तो आप कहें ना कि यार 200 के बाद ट्रेड ही बंद हो जाए, अब वो लगे वो मार्केट आपको खींच लेती है। सर साइकोलॉजी के लिए आज भी मैंने आप सिंपे में 3 अकाउंट आज ना 3 मैंने ट्रेड किए, ठीक है, तीनों मेरी ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये रियल में करता हूँ ना तो देन अच्छा एक क्वेश्चन, एक आपको रीजन आपको दूं, इसका एक लॉजिकल आंसर है, प्रैक्टिस उस टाइम पे सिम ना करें जब मार्केट रियल मूव हो रही हो। पता क्यों? 9 से 11 है ना, आपने पहला मिड बैंड लिया चल गया, दूसरा लिया चल गया, तीसरा लिया चल गया, जब आपने रियल का टाइम लिया वो डाइवर्जेंस आ गई थी। तो आपने जो 9 से 11 में ना सिम ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में आपको पता है उसमें रियल डाल दिया, उस वक्त तक या मार्केट की डायनामिक्स चेंज हो चुकी थी। तो अब पहला ही जो 9 से 11 का टाइम है ना, इतना पावरफुल है कि वही आपने रियल ट्रेड लेने होते हैं। नहीं वो तो हम देखिए, मैंने एक ट्रेड डाला है और वो भी एक आध मिड बैंड से दरमियान में से लग गया, दैट्स इट। बट एंड ऑफ उन्होंने आई डोंट नो उन्होंने कितने ट्रेड डाले हैं। गौरव जी आपने सर कितने ट्रेड आज किए? 3 ट्रेड, क्या नेट चल रहा है? ठीक है, लेकिन प्लस ग्रीन में है ना, इतनी सी बात है। 200 250 करते करते आपका 2000 भी हो जाएगा। और जिस दिन आपने मिस्टेक की ना, देखिए मैं 28 दिन से कर रहा हूं आपके सामने, ये वाले अकाउंट सेलों पे हैं, नए भी आएंगे। आई डोंट केयर कि मैं 20 साल से टीच कर रहा हूं या ट्रेड कर रहा हूं, 4 साल से टीच कर रहा हूं, 20 साल से ट्रेड कर रहा हूं। जिस दिन मेरे दिमाग में मेरा डिसिप्लिन खराब हुआ ना, उसका मैं आप ही की सीट पे बैठा हूंगा, मैं कहूंगा यार ये उड़ गया यार, राफे क्या गलती की है यार, बन गए थे और लेने के चक्कर में था, या बन गए या लॉस आज का पूरा हो गया था, थोड़ा सा और ले लेता कि मैं रिकवर कर जाऊं। मैं डैनियल से रिक्वेस्ट किया कि 1 आवर की साइकोलॉजी की क्लास दे, 1 घंटे की, फॉरगेट ट्रेडिंग, उसमें ट्रेडिंग की बात ही नहीं होनी। मैंने कहा भाई मुझे हिंदी में और इंग्लिश में 1 आवर के लेक्चर चाहिए। आप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में बैठे हो, आप उन वुल्फ्स के साथ डील कर रहे हो जो आज लूटेंगे मार्केट को जाके, चोर। साइकोलॉजी पे बात करनी है और उन्होंने एग्री किया है कि हम आपको 1 घंटा एटलीस्ट एक ट्रेनिंग सेशन दे देंगे, क्योंकि माइंड सेट की गेम है यार। वो तो मैं आपको बोल बोल के कह रहा हूँ, S1 आ गया, S2 आ गया, मिड बैंड आ गया, आपका हाथ और दिल इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो एनीवे जो हो गया वो हो गया, अब उसको, लेकिन उससे कुछ सीख लेंगे यार। मैंने 250 बना लिए थे, दिन भी नहीं है इंटरेस्ट रेट वाला, अर्निंग्स है, कल भी ऐसा ही होना, कल भी देखिएगा ट्रेंड पे ट्रेंड फेल होगा, क्योंकि कल अर्निंग्स के बाद इतनी वॉलेटिलिटी है कि टेस्ला का स्टॉक, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक और मेटा का स्टॉक, आप ग्रीन पे जाएंगे वो रेड हो जाएगा, रेड पे जाएंगे तो कल भी आप देखेंगे और परसों भी। तो मंडे तक ये काम डाउन चीजें हो जाएंगी, कोई नजर आ जाएगी, तूफान जो आया हुआ है ना बैठ जाएगा। तो मैं अब आपको आपका मॉर्निंग ओपनिंग का सेशन दे देता हूँ। तो दिस इज हाउ I can't see my password.
थैंक यू। अब देखिए ना, मार्केट इतनी डेड हो चुकी है क्योंकि ये साइकोलॉजी पूरी दुनिया में जा रही है। हर बंदा बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, किसी के पास रियल अकाउंट है। बाय द वे, आप सारों के फंडेड अकाउंट मार्केट मूव नहीं करते, हम सारे डेमो अकाउंट में होते हैं। वेल्थ सिंपल वाले, इंटरैक्टिव ब्रोकर, टीडी वाले, थिंक और सिम वाले, जीएफएफ वाले, एटीएम वो एक जब ऑर्डर लगाते हैं ना, करोड़ों ऑर्डर लगता है दुनिया में हर सेकंड में। कोई इंडोनेशिया बैठा है, कोई मलेशिया बैठा, वो ऑर्डर काउंट होते हैं। आपको लगता है आपके बुलनाक्स ने या मेरे एपेक्स ने कुछ मूव किया? जीरो। आपके ट्रेड की कोई पावर नहीं है, वो सिमुलेशन एनवायरनमेंट में होते हैं। डेट ओ सर, आप समुद्र में भी नहीं है, आप बाहर बैठ के ना अपने ही ग्लास में बच्चा पकड़ रहे हो, तो सीरियसली कोई वहां समुद्र में भी नहीं है, क्योंकि ये सिमुलेशन मनी है। रियल मनी लाइव अकाउंट होता है और वहां पर लोगों के पास मूव करने का होता है, लेकिन उसमें भी अरबों करोड़ों डॉलर चाहिए होते। तो जस्ट बिकॉज आपको लगे कि आपने मैंने यहाँ बहुत कुछ किया है, आप रियल ओशन से डेटा ले रहे थे, बाहर बैठे हुए थे ना, ये रियल मनी आ रहा है। ये सिर्फ आपको वो एग्जाम देते हैं, यार ये बंदा रियल मार्केट के बिहेवियर को देख के कुछ कर सकता है। ठीक है, आपके पास $5,000 है, आप जाके एएमपी फ्यूचर में अकाउंट खोलो, जो ट्रेड डालोगे दुनिया को पता लगेगा, क्योंकि वो एक ट्रेड आपका है। तो जब 1,50,000 का वॉल्यूम आता है ना, उसमें आपकी भी एक ट्रेड आपका भी है। वो आप कहते हो यार ठीक है, मैं नियाग्रा फॉल में ना, अभी हम नियाग्रा फॉल टीवी में देख रहे हैं और हमें लग रहा है यार बड़ा मजा आ रहा है। पहले तो हम नियाग्रा फॉल जाओ और फिर जो आप एक ट्रेड डालते हो ना, वो एक चींटा गिरता है, वो आपका है। तो इतनी आपकी लो पावर है इस यूनिवर्स में, राइट। तो हम लोग यहाँ वर्थ पे इतने चैंपियन बनते हैं, सिर्फ गूगल अर्थ में ना जूम आउट करके देखा करें। वी हैव नो पावर मैन। सो एनीवे, enough psychology, let's get back to नहीं रियल वो देते हैं और वो डांट देते हैं। भाई हिम्मत कैसे हुई आपकी लॉन्ग में शॉर्ट करने की? वाह, खून खुश्क हुआ होता था डैनियल के सर के, क्योंकि वाह जी, हाय एब्सोल्युटली। Just 30 seconds. इसमें जो आज Nasdaq है वो तो didn't go to S&P, but ES की but ES ES में वहाँ ES चली गई है। असल में Nasdaq को ले जाएगी, इसीलिए मुझे वो डर है कि आउट ऑफ सिंक हो गए हैं फिर। So yes, when they are out of sync, they're out of sync, should be Nasdaq will take it. तो इसका मतलब है वो एक्सपेक्टेड लोग हैं। Hi, how are you? I know what is Yes, yes. so when I came to this
There's no question. That's what I can do PAs and I did it and I lost. Yeah, so that's fine. I was sick all the time. I couldn't sleep. I hope you still tune. I haven't this month because I was sick. I'm gonna start my back. No, we'll get you But I want to see which one you like. Sure. No worry about Because I say the P one, okay, yeah. Perdia, but that's as close to real. Yeah, that's fine. I was doing that. Okay, that's fine. Then I'll explain Perdia to you. Or both. Yeah. Either one. No problem. I'll give you a full explanation on Perdia. What do you think? Is it better to wait to like this person? My question to you is, how's your hang on trading? I mean, no, but in terms of, are you able to do buy, sell, stop loss areas? Then you're fine. Yeah. But you're still following the basics, right? Green to buy, red to sell, mid-band. Good. So it's a discipline issue. All right, that I can't. No, it's actually not a threshold issue. Okay, then you will be fine with Perdia, nothing to worry. It's a threshold. Threshold, I will get that taken care of you. Getting to PA would be the issue. No problem, no problem. All right. Or I should say, or I was thinking maybe of something, I'm gonna be, I'll be there until 4 months. Okay, 5 see, months. Perdia is semi-live, not full live. It's a gap between legends and live. So I will explain you both. Okay. Do you want to come up or? Yes, yes. No, Ramji, best of luck. Best of luck. No problem. Nasdaq नीचे आ गई, ऑलमोस्ट 456 तक आ गई, 456. बस सर मैंने एरिया दस दे रहा ना, एक्सपेक्टेड लो ते आई थे, मैं जरा कुछ पॉइंट चुकता है। मैं नहीं आज नैस्डैक जो है ना उस ईएस से जरा अच्छा बिहेव कर रही है, तो मैं नैस्डैक का एक्सपेक्टेड लो वेट कर रहा हूँ और ईएस का एक्सपेक्टेड लो, तो ताकि अभी S2 तो मिस हो गई ना मुझसे, तो S2 तो चली गई, तो अब एक्सपेक्टेड लो का वेट करना है। It's something called the diamond pattern we do. So at 2 p.m., the market generally comes back to the same point, but I don't trade on interest rate news. So per diem, yes, yes. हाँ जी, हाँ जी। मंडे को, हाँ, क्योंकि ये 4 दिन ते ट्रेड वाला रिदम नहीं बढ़ना, तो मंडे को कर ली, no problem. Okay. No, that's not. You're fine. It's fine. So it's just, I gotta figure out a better way to put this projector. Okay. But good to see you. It's been a while. Yeah. That's good. See, back when you
joined the program, we truly only had Apex because that was the only way to get you, and GFF, right? Before you, it was only GFF, but now things are slightly better. So I'll explain you both. No live threshold. So this will at least, why am I pushing not take profit on you, the new company I just explained? I'm pushing because this is discipline. More than trading, you gotta hold your horses. So which exactly. So let's do per dia. Let me explain legends. So January 28, if you decide to buy, I don't recommend you buying anything until Monday because you may not be able to trade like with today is gone, then you have like Thursday, Friday. So buy it on Monday. Buy it on Monday. Maybe they have a sale February or. Okay, I can help you connect if that's the case. No problem. Or any desk, anytime we can log in. Yes, yes. So, but let's say you bought it today on February. So many of these are like Apex. Here you will pay $50. You have a month to complete. What is your target? $25,000 is your account. $1,500 is your threshold. Is this 26,500 and 0? No difference. 30 days. So you have no 7 days. There is a 7 days limit. So here's the rules. Make 1,500. Don't lose off negative 1,500. Number 2, trade for at least 7 days minimum. They don't want you to complete your EA in 1 day. So that's the difference in Legends versus Apex. Number 3, they put a limit on you, $450 a day. Don't make more than $450 a day. So there's a Apex, just says you can open an account at 4:30, complete it by 6 and pass. That's how Apex allows you. Even in 10 minutes you can do. But they say, no, we want you to see. You can take 7 plus, meaning take 7 or 10 or 8 or 9, but don't do faster than 7. That's the requirement. You can do 400, but then, but you still got to make 100 or whatever. Number 4, close your trade at 4:30 p.m. So that's normal. Yes. And the 5th is, I don't think there's a 5th. I keep forgetting. Sir, 4 ही condition है ना? 3, 4, 5 है. 5 condition. यही conditions. So once you are done this, you go into your PA. Okay, so PA will cost you $150 one time, no monthly, just like Apex. There's no live threshold, which is the benefit. So, but you will still have this as a max. No, for life. Like Apex. So again, I'm comparing this for you Apex, and Apex, the major difference is live threshold. Still has threshold. Still has 1,500. Apex has 1,500. Legends has 1,500. But the big difference is Apex doesn't have a live trailing threshold, which you always saw. You bought it at 6,100, price went to 6,107, and you closed at 6,105. They gave you the money, but then you still lost $100, which is annoying, right? So you have to work with an exact exit position in Apex. So again, same idea. You made $100, they won't give you any more money because your maximum threshold stays at 1,500, right? So that doesn't change. You lost 150, of course, 150 goes down, but if you make back that 150, your threshold is back up, right? But they don't give you more than 1,500, and that's your target. So this is always constant, and this is always constant. So this is just like Apex. The only difference is live trailing threshold. You complete this, you go into, they call it PA or master. It's a higher account. Before live, it's a master account. Now the rules change slightly. They have some rules. So they said, all right, make
$2,000 in legends, not 1,500. Apex says 1,600. They said 2,000. So there's a $400 more. Of course, they don't like a loss of $1,500. If you lost $1,500, you're done. Right? Just like Apex, in a PA, you lost $1,500, you're done, right? Number three, they want you to do this in 10 plus days. Not Apex says 8, Legend says 10. So that's the difference. One more condition, number 4, they want you to make at least $150 in those 10 days. The day that if you make $100, your money gets counted, not your trading day. So trading day is counted as 150 plus. And of course, condition number 5, don't make more than 450. That's the same rule as Apex. That changes nothing. And again, 430, next rule, 456, 430 rule. Minimum, is there a minimum on the EA? No. Just the PA. So PA has make 2,000, don't lose 1,500. Do this in 10 days or more. In those 10 days, not consecutive. You can take as long as you like. 1 day, 10 days, 12 days, 15 days, 30 days, 100 days. There's no upper limit, right? And then you have a 430 to exit, and that's how you kind of work. in the news, nothing like that? Nothing. You don't trade the news anyway, right? Yeah. So once you get to that, you'll get a payout. When you get to 20, Yeah. over 2,000. So you get $1,500 from this account. So that is one way of doing it. So this is an alternate. We are no longer pushing Apex to anybody unless there is a sale. 90% makes it worthwhile. But otherwise, people are struggling. And especially new students says, what is a live trailing threshold? And then I got to explain that, hey, he says, I saw 200 and all of a sudden I am negative 100. What does that mean? So I'm like, no more Apex. I'm not pushing Apex. Only companies I'm pushing is end of the day. So, that's why. Now, another company, now actually we introduced one more company. You can watch my live stream. It's all there, but more companies are coming together to be able to give you better options. A company came, Perdia Capital. They said to us, you can go and put in the coupon code. It's expensive in a sense. The word is called S2F. Straight to PA, straight to funding, straight to master. Your cost is $750. Okay? You buy today, January 28. There's no time limit. Infinity. There's no monthly fee. So $750 you will pay. They will open an account like this, $100,000 and $3,000. Remember, just like here, they open an account. What is your target? Don't go to 0 and make 103,000. That's it. So you have 3,000 to lose. So let's write the conditions. Make 3,000. Don't lose, like loss. No 3,000 loss. Time, infinity. You have as it. Now they have slightly 2 different rules. Of course, 430. Rule number 5, I'm going to draw here 5 boxes. 5 days must be $200 plus. I don't care. You trade 1,000 days. They don't care. But out of those 1,000, 5 days must be $200 plus. Now, total number of days are 10. You cannot do less than 10. So it's called 5 plus is 200. 5 days, and then the 10 days are total. You cannot complete this before 10 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it's called 10 plus days. Of course, you can do it in 12, 13, 15, 16, 100, 500. So make 3,000. Don't lose 3,000. There's no monthly, by the way. 750 one time. So it's one-time fee. It's direct to PA. So you skip the line. Wonderland, I'm the express guy. I don't care about this line, but I'm paying you more because I'm skipping the line.
everywhere in life, when you want to go skip the line, you got to pay for it. So you have skipped the line, you have paid them $750, and you're directly in PA. So that's what it is. And you have a 3,000 or 15. Yeah, so it's slightly more. They have a $1,500 account, but it doesn't. It's not enough threshold. I think it's $550. So for $550, for $200 more, you get double the threshold. Now you complete this, they will send you an email that congratulations, you have passed. What would you like to do? Do you want us to give you this 3,000? They offer you this because the money that you're working from day one, they offer you. So from 0 to, so right off the bat. They can give you this 3,000. So as soon as you finish, you do your 10 days. Yes. 3,000. You can. However, they have a. Then you have to have something in the background to play with. Yeah, but so exactly. So what you do, you're like, all right, keep my 3,000, hold it, and now anything above me, give it to me. And you can withdraw your 3,000 anytime. Okay, so this is, so a lot has changed in that 1.5 year. That actually, like. So Because this is comes again- down to discipline. It has nothing to do with trading. No, it's easier said than done. You know how. Would you do that in live? Would you do that in DS, or would you do that in I do this in micros, in micro? That's what I'm saying. Would you do like with micro? by micro Nasdaq, 2 quantity. I like Nasdaq. Yes, it's You got fast. me- you got me hooked No, up. no, it's the areas. When you, like today, my son traded. He sent me a picture, by the way. He's like, he's doing better than me because he says, I don't use any of your software. That's what he wrote. I don't need the software. Take my laptop away. And he sent me a screenshot. And he said, look, just read his message. At I love these. 9:48, these case studies. Look what he says. Look, he says, so he's 18, right? And he says, man, perfect areas today, bought it at 501, got out at 526, $800 profit, 3 accounts I will pass today. So, you know, I said, congratulations. But the idea is discipline to wait for the areas. Computer predicted a number that if S2 hits, S2 will hit between 500 to 525. He waited for 500. He took the trade and his P&L is showing now he is at what? 26,337. He's almost there in Apex. Why he bought Apex? Because I said, you're spending your own money. He bought it for $16, the January thing, right? So on the sale, I'm like, yes. So a lot has changed. Many companies are coming forward, and this is the Perdia. And Perdia is one option. Legends is another offer. So basically, this is like 200 versus 750. Yes. But this requires nerve of steel. You know, I got from 25,000 to 27,500 in about 9 days. But you know, 9 days, everyday emotions are different. Some days I'm angry at my wife, some days angry at my kids, some Why days. do you always have to be the wife? No, because Oh, yeah. no, I could be a. Only different than mine. Yes, It has I to be I with used the to wife tease it or even with before her. you make that comment. So That's okay. I know I slip You of it. can't say husband. Yes, of course. You can say, hey, he didn't take the trash out today, and then I'm angry, right? So it's just a matter of, okay, I should say spouse, the other way around, because the way, Sorry, I'm just teasing. I'm just teasing. no, the way the liberals are doing, you should be calling the other better half, right? It should be anybody, right? So it can be. So idea is, I don't care. You watch. My Like, other issue I have, when you're in Dubai, yes, you are in the night. correct. So you will It's open your computer at extremely slow. 6 p.m. It's like you're calling. No, you gotta open at 6 p.m., which I is. can't do 6 p.m. because my husband Then calls you me, gotta I don't do, know what no. Then you I'm gotta like, do oh. European session, 3 a.m. here. That When, was you know like why that. I love Dubai when I was there, and I still had that golden thing, is I can trade every damn market, literally. Well, he was telling me to do FDAX. You can open up an account there, do FDAX, the German market, and take the area of the FDAX. We have FDAX now. We have the areas, use that. So what I'm saying is, you can literally, and in UAE, take advantage of Asia, Singapore, Europe,
and Middle East and itself, because you are the center of the time. At 6 to 7 you sit, you do night session and that's your last session. Yeah. And so I'm just saying, pick the 3 a.m. to 6 a.m. of European session. Yeah, so yeah, so exactly. So if you don't want to do 6 p.m. session of New York session, then you do that session. It's no, because I've seen gold move, because those markets trade gold much better, or crude oil, right? We got OPEC and everything. So, or try FDAX, right? So these are some of the conditions you have. So hey, I don't care you buy a $16 account or you have $1 million in GFF, irrelevant. You're going to take the same action, mid-band, discipline, mid-band, area, discipline. And 99 is discipline, 1% is the entry. So that this gives you if you're making, because remember, GFF, you're paying maybe Ninja fee, data fee. So if it's gotta be like, it's gotta be. If you're not making at least $150 a month, then you're not doing GFF at justice. Because $23 they take on level 1 data, CME and COMEX, and then they charge you $100 on the Ninja. So that's $122 US going to waste. So unless your account balance is not rising by $122 every month, then don't. But maybe you want to switch to AMP futures. They don't have Ninja fee, but with these, you don't have a monthly fee, right? So. चली गई जी वापस एरिया पे चली गई. So And you can take the pair dividend. Yeah, here the moment you complete this, Mansoor has taken $1,900 out of it. No, he's right here. He's every day he shows up He's to. right here. He shows up. I'm like, come on, the guy took another payout. Yeah. रोज का निकाल रहा है. Manvinder, मंसूर $700 और नहीं. मंसूर भाई नवीद भाई ने फिर निकाल लिया. हाँ, Mansoor again 700. 400 नवीद भाई ने तो अपने पूरे भी कर लिए. This is public. ये भी हमारे स्टूडेंट, राणा जी भी, ये भी हमारे स्टूडेंट. इतने स्टूडेंट्स हो गए हैं जो. So yeah, that's part. So this is like you spend $750 and somebody give you $3 grand. That's it. Think of it like that. If you were to put no, $750 of your money. No, but I'm just saying, it's like After you made it, but remember, if you go open GFF right now, you gotta send them $3 grand to do $3 grand. Of course, daily payout, but it's $122 a month, right? So that's how. So should I close the GFF thing? It's like it's on the stance of. no. Are you able to make some money? No, but if you're not, then it's dead money, right? Why I like to not close these accounts, my personal is. You never know what these No, what will happen in the futures? I have a grandfathered account, has some money sitting in there. If they ask, hey, I have an account open. Maybe it has $500 in it, but I have an account open. So with $500, you can go just the data, not the Ninja, like $12 a month. It's like a gym membership we never use, right? So donation, but at least go in and put in one micro trade so you can recover that $10. It's not that bad. but if you recover the micro trade of $10, you have to put on. You have to put Make- Ninja. No, you can trade with the area. Open up the CQG, look at the area, put in micro, 5 ticks, get out. No, you don't need a Ninja. You can do the trade on GFF and AMP on CQG, Ninja free. It's free. Meaning just trading with the DOM. You open up a DOM. Okay, multi-chart. Multi-charts कर लें, CQG कर लें, वो free में है. Free है ना? So anyway, okay. If you want to trade with the Ninja and your GFF together, you got to pay $100. You can get their app for free. That just has a DOM, buy and sell. So you will see let's say you have legends. You have legends connected. You're watching the data. जो हम AMP पे करते हैं यार, legend पे देख लेते हैं और इधर ट्रेड डाल देते हैं फ्री में. ओके, मेरे क्वेश्चन है, आपने एक एरिया देखा, आ रहा है एरिया S2 पे आ गया, प्राइस तो है ना, आपने CQG खोला ऐप और वहां पर ट्रेड डाल दिया, और क्या? And that's part of the GFF? Yes, free.
So you don't have to. Can we get that? करते हैं CQG उनसे ग्रेग को कहो विनीत से कहो कि $2 ले लेंगे उनसे कहेंगे यार CQ की ऐप का पासवर्ड दे दो बस फ्री में दे देते हैं उनको लड़े तो सही थोड़ा तो निंजा नहीं चाहिए उसको ट्रेड करने के लिए just a dome because yes exactly my son has TradeOway open on his phone and he looked the Nasdaq area 18-year-old he's like 500 पे आ गई है buy करें सिर्फ वो ये कर लेता पहली दफा हिट हुई है कि नहीं because first attempt है ना and he's like yeah but if for those that do areas don't even care about charts so experienced traders Maybe I like, how do I get that one? just call GFF And just ask him to give me that. just say कि मुझे CQG का पासवर्ड दे दे And then I'll call Michelle today. yes But I'm thinking that, Victoria, should I start? now this the choices here this will put a if discipline is an issue don't go here I had a discipline issue last interest rate I lost my lesson my account is in ICU intensive care not dead yet because we like all right extreme low and 2 micros interest rate on extreme low it fell 400 points more from that point so I not now interest rate hey it's too hot even though interest rate went down all right we're watching it's falling extreme low I don't enter any below I'm far from extreme low 600 points I want to tell one more thing. About 50, 30 and legends. In legends, you have $450 per day, right? Alpha हाँ जी It does not affect. वो करते हैं You can do more. If you do हाँ. more, it will not affect your हाँ Dr. Bhai, diverge वो लो of the bar But they Dr. want. Bhai, just one thing. yes Let's say you are in per year. yes GA, हाँ जी okay? You have to make $3,000. Correct. Let's say in one day you made $3,000. okay it still doesn't count one day or 200 5 दिन It ऐसे will count as Then one day whenever- of $200. Then yes you have to still make 5 days of $200. yes Make 4 days 4 Four more days. correct And And- complete the 10 days. Ah. so that would count as a So make दोनों $100 boxes check then, कर देना $100 ये भी check हो गया ये भी then. check हो गया I get what you're saying. Yeah. Now, this got done, $250, Yeah. and your trading day got done, even if you made $3,000. But then, हाँ जी the next day, मैं आपको मुझे एनी डेस्क दे मैं इनका भी this चेक will कर go लूँगा back to एनी डेस्क $3,000. Because it's going to show 6,000, it'll go back to $3,000. It doesn't mean that you made extra money. Huh? 50%? No. So there's no अच्छा limit. क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਟ वाला ਕੂਪਨ ਆਇਆ ਹੈ You ਨਾ can do $600. ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਰ ਕੂਪਨ ਬਾਏ ਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ So it will add up. ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਮਨੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ 1500 ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਕਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹੇਗਾ ठीक है अच्छा लॉग इन करो ना एनी डेस्क से जी सर हाँ जी सर नहीं यहाँ नहीं गैप ट्रेड ये होता है गैप ट्रेड आप पीछे जाए जब नहीं जित मिड बैंड पे प्राइस जाएगी वो डॉट्स नहीं जाएगी हाँ जी यस यस हाँ ये डाइवर्जेंस है ये जो लाइन वाइट लाइन है हाँ देखिए स्ट्रेंथ नीचे गई कि नहीं नीचे स्ट्रेंथ नहीं गई ना तो आपको पता है क्या यस यस हाँ गैप होता है गैप ही डाइवर्जेंसी होती है लेकिन लाइन नहीं बनती गैप क्या कह रहा है मेरी प्राइस ही आई लेकिन मेरी बीबीज ऊपर नहीं आई तो टेक्निकल वर्ड उसको कहते हैं रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस लेकिन उसमें वो लाइन नहीं बनाता लाइन जब बनाता है जब प्राइस और स्ट्रेंथ में मसला है हाँ मैं करवा देता हूँ मुझे एनी डेस्क हाँ आप मिड बैंड पे खड़े होंगे नहीं लेकिन होता ये है कि इसमें आप देखते हैं मेरी बीबीज मूव ही नहीं हुई लेकिन बीबीज मूव होती हैं डाइवर्जेंस के ट्रेड में यस हाँ जी नंबर देना है 52 अब नहीं उसको खोलें ऐप को खोलें एनी डेस्क की ऐप को खोलें And Dr. Bhai, हाँ जी $25,000 account is take profit. $75 का कूपन डाल के सुपर एरियाज का कूपन डाल के There's one between Korea and Nigeria.
मैं अभी करता हूँ क्या जी नंबर 1 2 एक्सेप्ट करेंगे मैं सर तो एक्सप्लेन करता है नो प्रॉब्लम लेकिन मेरे सारे रिकॉर्डेड ने सैटरडे जब नहीं मैंने लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेनेशन ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ताकि मैं नो प्रॉब्लम बात कम खत्म करेंगे नो प्रॉब्लम गैप ट्रेड यही होता है कि भाई आपका जो बॉटम ऑफ द बार होता है नहीं अच्छा बॉटम ऑफ द बार भी गैप ट्रेड ही होता है बॉटम ऑफ द बार आई ना प्राइस तो बीबीज बिल्कुल नहीं नीचे आती तो वो भी रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस टेक्निकल नेम होता है सर वो हर मिड बैंड पे बैठे होते हैं जैसे ही पहली डायरेक्शन चेंज हुई उसी में 2 पॉइंट लिए खत्म किया बंद किया हाँ हाँ वो जो इन्होंने हिंदी में किया Yeah, that instant. There is no time limit. You can do it right now. Give me any desk. 5 minutes. Yes. CQG app. Emotions go like that. ये आपकी हो गई जी 37 का क्योंकि 50%. आपका मैं हैरान होता हूँ सिर्फ आप ही उस क्रैक में फंस गए वो आपको जवाब ही नहीं दे रहे No, it's why you cannot. I need more information. What information they need? What information they need? It's a positive. Can I give my anything? मैं अभी करवाता हूँ बस See, if you were sitting at -12 से तो if we had already made 250 today, If I haven't been trading for so long, should I practice on the legends? I would recommend yeah so legends is 50 better than 750 That's true. And then see how it is and get back into it. Correct. Just pass it and then you're okay. Correct. So then I'll wait to do, should I just wait to do the legends when I get to upheavals? Yeah, and then any desk and I can do it. No. Okay, then what I'll do is I'll WhatsApp you. Sure. Anytime. And then we can wait out, I guess we can connect that way. Yeah, I can log in remotely. But I won't do it, but what time is the best time to text you? Because my timing is different in the evening. But then Best time is after 11 a.m. here. Here is okay? After it's I can yes. text you maybe. Yes. Okay. But no, that would be what time in Dubai? It would be At least 11 a.m. So it would be around 8-9 a.m. maybe over there. No. They any desk thing. See, habit concepts pretty much straightforward. See, if you blow your account, you blow. okay. So then I'll do that then. Right. Okay. No It's problem. okay. Thank you so much. It's a learning process. No problem. Good to see you. वो उसमें ज्यादा वो कहते हैं ना कि 416 इतने स्टॉप लॉस कैसे हेड हो सकते हैं पर हो गए तो क्या करूं हो गए ना कल क्या हुआ था कुछ और हुआ था आज क्या हुआ कुछ और हुआ आज स्टॉप लॉस हो गए नॉर्मली नहीं होता वो इतने सारे आज मत करो या करना है तो माइक्रो में करो हमने क्या फिर या माइक्रो में करो अब मैं लाइक अब तो बेचारा वो अकाउंट में Absolutely. Sure. आपका हो गया जी अब आप निंजा रिस्टार्ट 10 मिनट में करेंगे तो हो जाएगा एनी डेस्क जी 1294 939 416 एक सेकंड रुकिएगा दोबारा daytraders.com
ये ना लो पहले तो इनो कर लो आई डोंट पहले एक कर लो देखो ए कंपनी इज बेटर टू बेटर ही होंगी प्राइस भी थले जाएगी नथिंग टू वरी पहले ए लेजेंड आज है ना 10 दिन बिल्कुल तहम्मुल दे नाल करो फिर अकाउंट लेने मैं 5 मिनट चला दूंगा लेकिन ਉਹਦਾ फायदा कोई नहीं ना कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ब्लो करोगे उधर चले जाओगे दोनों ब्लो करोगे फिर आ जाओगे that's not the game is to take one account ਉਹਨੂੰ 10 डे ਦਾ मतलब है कि every day 250 200 250 200 करके जी सर नंबर एक दफा 1294 हाँ जी एक्सेप्ट करें 250 बड़ी रकम थी सर उसके आपने कल कहा था मैंने 475 कर लिया उसमें 250 और डालते ये आपका हो गया था नहीं टेक प्रॉफिट में अभी तक तो 75 ही है अभी तक तो नहीं वो ठीक है लेकिन टारगेट बढ़ जाता है ना यार मैं तो मुझे 1500 होने ना आप कह रहे 3000 का ना नहीं पहले उन्होंने अभी रिमूव डेली लॉस लिमिट जब से खत्म की है ना तो मैं अब कह रहा हूँ कि विल फाइंड आउट इफ आई हैव 5 अकाउंट्स सो लेट्स सी they have given you target yes half of that one. yes 50% 50%. लेजेंड्स में लॉग इन करें चैट खोलें हाँ जी मुझे एनी डेस्क आप मुझे व्हाट्सएप करें मैं लॉग इन करता हूँ आपके एरियाज चार्ट पे डाल देता हूँ एनी डेस्क दो डेस्क 1-800-77 286 नंबर ठीक नहीं आया सर 1-877-655 एक्सेप्ट कर लें एक्सेप्ट नहीं सुपर एरियाज के बैनर से चले जाना वो आसान होगा आपने यहाँ से बाई किया ना हो सकता मैं यहाँ से बाई करूँ मुझे तो बीज आपको बाई करने के लिए आपने बाई कर दिया ऑलरेडी लॉक किया क्यों करना जब आप बाई में ऑलरेडी हैं जब तक आप ट्रेड में जाओ बाई नहीं करेंगे हाँ तो आपके लिए नंबर ये 77 नंबर चेंज होता जा रहा है वो नंबर बढ़ता जा रहा है मैंने जब किया था आपका हाँ जी हाँ लेकिन S1 भी है फिर S2 ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ S1 ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ S1 ਸਪੋਰਟ ਬਣੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਉਂਸ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ S1 ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ S1 ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ट्रेड लेके निकल गए तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट मीनिंग उस पॉइंट ते आ गई है
Unit is, I think, superareas.com. We have a unit. So at the bottom, unit. What is the unit? Unit 1, 1575. You will see right on the front on Trinity Drive, 1575. You will see Apex board and lots of cars may be there. Trust us, I have lost. You make money, exactly what he said. You lose, you're gonna make money, you're gonna lose. You just have to be able to walk. He's completely right. That's fine. That's so $6. Like you said, what they're teaching you is exactly wrong. What they do, what he's emphasizing is like discipline. It's easier, it's harder to stop the button when you're on negative, right? For some reason. It's a gut mind. Especially if it's wrong. But still, oh yeah, take it. But when it's your money, you want to, it's going to come back if it doesn't come back. We've all been there. We have all. We keep going back there. Yeah. No, it's just, good for you. अब सर वेट करते हैं तो यही रिक्वेस्ट थी कि भाई कल पे किया है ये In the evening, I thought it is processing. no it's Something else. एपेक्स का ये बहुत ओ भाई इनके हर कंपनी के ना एक फायदे हैं दो नुकसान है लेजेंड वाले इतने स्लो हैं ऑर्डर को ना चलाने में आगे अब मैं सर आपका वेट हो रहा है अब ये आप इसको बस देख लीजिएगा रीजन में sorry in Korea if you earn 3,000 you can request full 3,000 and then your account is dead they will not give me because anymore earlier they give me 2,000 maybe 100,000 minus 3,000 and 12,000 Yeah. they allow me but when I earn 3,000 Yeah. you take my profit they don't give me no they give you after any money you make in per dia is yours today but not before 3 103,000 yes I took 3,000 profit yes then finish your account you paid 750 you earned 3,000 game over now after I do the profit 6,000 no in per dia you bought an account Yeah. right and you paid 750 yeah you got $100,000 account and they deposit 3,000 Yeah. once you start earning once you made 3,000 you have two choices you can withdraw the 3,000 and close your account next time they will like no they won't because then you got to pay 750 again yeah I have to do 7 yes
But I don't think they will let you do multiple times same thing. They 1 or 2 times. 3,000, then you can take. Yes, 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 yes. $10. You know, Michael, he's ready to go. You don't lose the $10. That's really a good idea, Rocky. Is there any reason in reason? Because I passed the P account, then I give profits 1,200. Day before, yesterday night, you have given the target. Yeah, because it always stays at 1,500 maximum threshold. Yeah. But your Because target, it's gone down. yeah. I took a pack 6,075, but it goes against me, and the account blown up. ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸਕੇ 12:30 हाँ जी, मेरे नाल होई सी? हाँ जी किस चीज दे सेटअप करना है ट्रेनिंग ट्रेनिंग दा? हाँ जी डैनियल ਤੁਸੀਂ मैं डैनियल नहीं, अंदर बैठे हैं। ये कोई हो सकता है वो दूसरी बार मुझे अकाउंट ओपन नहीं करना चाहता। Yes, day before night. हाँ। I put 6,075 because this was the expected night can go up. It is this. उसी का पर मैंने एक ऑर्डर लगाया था for buy, but it goes against me. हाँ। Then the account blown up. Yes, account is blown. The moment it won't let you trade, meaning account is blown up. So we are opening again another account in Legend. नहीं, लेजेंड तो कल आपने पे नहीं किया। हाँ, पे किया। तो फिर वही है ना। ये हो सकता है मैंने आपने ब्लो भी कर दिया राइट अवे, लेकिन उसकी ईमेल आई है कि फिर वेट करें ना कि यू हैव योर अकाउंट इज लिक्विडेटेड। वो तो अभी पता था वो। देखते हैं क्या है। अगर तो अकाउंट ब्लोन हो गया खरीदते सार, आप तो कह रहे हैं अकाउंट आया ही नहीं पेमेंट के बाद। हाँ, वो जो पीछे चला गया वो चला गया, लेकिन ये जो अकाउंट है ये तो आपने पे किया ना अभी। They have given me same email what I have chatting with them. नहीं, मैं अभी आपके सामने चैट की है ना। आगे सर। नहीं, सिर्फ ए चार्ट जड़ा है ना नाल मैच खोल देता है, इन्हों में दे नाल एडजस्ट कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो उस वेले शो होएगा जदों एरिया दे कोल आएगी। मैं ऐदा रेकमेंड करदा है कि तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾइस ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾइस ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, S1 ਤੇ S2 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, नो प्रॉब्लम। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ 6077 ਵਾਲਾ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हाँ, देखा ना, करें जी रिफ्रेश। आ गया ना अकाउंट, डन। अब इसको हम करेंगे कनेक्शन, लेजेंड डिस्कनेक्ट। वो नीचे जा रही है ना आपकी नैस्डैक। और इनसे लड़ना पड़ता है, मैं लेकिन पूरा कि भाई कुछ प्रॉब्लम की थी, ये मेरा आईडी है, ये मेरा वो, उसके बगैर ना उनकी सपोर्ट।
हाँ कि भाई ढूंढ के बताओ। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ लिख दें कि जी चल पड़ा है, थैंक यू, दैट्स ऑल। जी बॉस। हाँ जी, $25 पर महीने का खरीदना पड़ेगा, ये एक बैड बात है, अनलेस कि आप साइन अप करो यूएई के आईडी से, तो यू कैन टू ट्राई इट। लेकिन आपका वो है, आपके पास आईडी है नेशनल जो भी है, so when you're signing up to Legends, put in your UAE information, because then FDAX may be free. I don't know, because that's called the Euro EX data. Maybe, may not be. लेकिन एक और फायदा बता रहा हूँ, कैनेडियंस पे टैक्स का मसला नहीं पड़ेगा। अगर आपके पैसे बन जाते हैं पर डे, आप हर चीज यूएई के एड्रेस से लेना। Why Canadian? Why not? It's free, zero tax. Whenever you're signing up, just put your Emirates ID. That's it. No, you are right. For them. Yeah. वहाँ पर आपके Actually, we are thinking of becoming a non-resident Canadian, because the amount of tax that we're paying. yes, I have both golden here, and it's a huge. Are you? No, but problem in Canada is you have to not even own a car in Canada. You can't have anything. You can't. So that's the only problem. Yeah. So if you have any assets in Canada, then you have subject to. In Canada? Yeah, I can recommend you. Yeah. Talk to them. The person sitting beside you. Okay. You said you didn't have it. You didn't even send it. I'm sorry. A month ago you didn't. Another mid-band touched, price came back up, gave you. नहीं है, अच्छा ठीक है, उस प्राइस थे, लेकिन मिड बैंड पे आई थी प्राइस आपकी, तो वहीं से, तो वहां से बाई करना है। चल, तो बैकग्राउंड ग्रीन है, एच के प्राइस एच से आ रही है, तो हाँ वहां पर मिड बैंड पे खरीदना है, एच के बाद खरीदनी है। आप बुक पढ़ें, बुक में लिखा हुआ है कि बाय आफ्टर एवरी एच एट एच एल कहाँ बनता है मिड बैंड पे, है ग्रीन है, तो ग्रीन कहां पर है, बाय करना है ना, तो प्राइस कौन सी है मिड बैंड पे। आप एच का सिर्फ ये देखिए प्राइस आ कहां से रही है, जब ऊपर थी। आपने कोई भी ऑर्डर डालना मिड बैंड पे ही डालना। हाँ जी, यस, दैट्स फाइन, इनटू यूएई वाइज अकाउंट, सिंपल। कनाडा से जितना पैसा दूर रखेंगे उतना बेहतर है। There you go. तो अभी आप एक काम करिएगा, जल्दी से वाइस खोल लें, फ्री का अकाउंट है, इफ यू कैन बैनर पे क्लिक करें, वाइस खोल लें, ताकि आपका एक यूएई आईडी से, इफ यू हैव एमिरेट्स आईडी विद यू, गुड। अब देखें, आपके लिए मैं बता रहा हूं कि प्राइस ऊपर थी 6084 पे, ठीक है, हायर हाई वहां बनाया। अब आपका माइंड कह रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है हायर हाई से, मैंने बैठना है 6080 पे, वहां पर अगर आप बैठे हैं, अपना ऑर्डर वहां लगाएं, तो वहां से बाय होगा। तो हर ग्रीन पे आपने बाय करना है जब प्राइस आ रही हो हायर हाई से। नहीं, वो तो बाद में बना देगी, जब ब्लैक कैंडल, हायर लो का वेट तो नहीं करना, मिड बैंड पे वेट करना है, और एंट्री मिड बैंड की है। एक है, अब पीछे भी एक आया है, पीछे भी एक आया, हाँ नहीं 177 पे आके चला गया है, वो नाल मिड बैंड एक ही है, वो पहले आके गुजर चुका है। हाँ एला मिस कर देता, हूं फिर हायर हाई बढ़ाएगा, फिर थले आएगा, फिर लवांगे। Okay, sorry, somebody's any desk I was doing. सर ए नहीं लाऊंगा, पहले डाइवर्जेंस एक हो गई है, 2 मिड बैंड हो गए। Yeah, they don't ask you, they don't. But news trading, I don't never recommend anyway.
आ गया सर है देखो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ तो ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਫਾਈਲ ਹਾਂ ਐ ਸੇਵ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ नो प्रॉब्लम डन हो गया yes boss ट्रेक प्रॉफिट बस हो गया डन हो गया अब उसके बाद क्रिएट न्यू और आप अकाउंट साइज करें क्रिएट न्यू जर्नी I don't see my name over here. नहीं वो बाद में रिफ्रेश कर देंगे एग्जिट साइन आउट करके दोबारा लॉगिन करें आ जाएगा पर्सनल अकाउंट Personal. get started Yeah, it's So fine, don't yeah. put that as UAE. UAE please 25,000 Did you super know it that for the money in UAE, they ask you for a social insurance number? Did you know that if you have a bank account there? social in Canada No, in UAE, because they're they're affiliated. affiliated So now the CRA is yeah. like catching everyone that made money. It's it's- really bad. It's no I declared my units there So does Cindy does the same yeah thing. so yeah go down We have to. Which is don't- next You need a good tax insurance. trade of it yeah Trade of it? trade of it ठीक है हो गया Okay. नेक्स्ट मेक श्योर कोड पढ़ाओ प्रमोशन कोड डालें सुपर एरियाज ठीक है जाके 75 का हो गया ठीक है अप्लाई हो गया अब जाएं क्रेडिट कार्ड से पेपॉल से कहीं से पे करें नो प्रॉब्लम अब नीचे जाके तीनों एग्री कर लें नीचे आ जाए एंड 4 5 I and can't do next that. They took social insurance number. So. yeah because just so you're not a Canadian you're not an American citizen I can't get my code because my SIM number, my SIM is not on my phone number. So I'll do you to have do it. yes so because then, you need that because you need your UAE number so do it in UAE no problem if you Can I do make it on my phone or should I just do no you do strictly UAE because that way yes sir मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਬਸ okay let me just do one more any desk and I'm coming to you guys can I use Pakistani? Yeah, if you can. Wise works, but only company that lets you open an account is Bullnox. That because Apex doesn't, Legends won't do it, so you just have to kind of work with. Please don't use Cloud Drive. Don't sign in. You retire when you only one more? So मुझे rejection बनी हुई है so बिल्कुल नीचे की dot है blue color का अच्छा candle कुछ red हो कैंडल दे कलर दा कोई परवाह नहीं है बैकग्राउंड कलर so rejection दिखाने थे बिल्कुल नीचे blue dot है नहीं ब्लू डॉट का मतलब है प्राइस आखिरी कितने टच होई सी लेकिन हाँ इट्स ओके लेकिन ऐसी ते मिड बैंड तो ही ऑर्डर लेना नहीं सर फुल ऑफ कार्ब्स See you when I see you. in 4 months 4 months? I won't be back till June 1st. Okay. Okay, I will Take call care, you, I'll absolutely. WhatsApp you from there. नो प्रॉब्लम थैंक यू वेरी so मच much for नो प्रॉब्लम अच्छा, आपका जी बॉस this has come up already. हाँ अब आप जाएं ट्रेडो वेट की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर ये जो आपको टेक प्रॉफिट ने यूजर नेम दिया है ना पासवर्ड उससे लॉगिन करें मेरा यूजर नेम नहीं ये आपको जहां मैंने एक्सपोज कर दिया था ना अपना उस पर क्लिक करें अपने अकाउंट के अंदर जो आपका शो कर रहा है उसके अंदर जाएंगे आपको एक यूजर नेम पासवर्ड दिखाई देगा ट्रेडोवेट का हाँ अभी शायद लॉग जब आपका अकाउंट सेट हो जाए ना फिर आपको एक यूजर नेम पासवर्ड आएगा ट्रेडो अब ट्रेडोवेट की वेबसाइट पे जिस तरह पर्डिया चेक करते हैं
ये यूजर नेम पासवर्ड ट्रेडोवेट की वेबसाइट पे डालें, जिस तरह एपेक्स का है, लेजेंड का है, पर्डिया का है। अब आपका ट्रेडोवेट भी बहुत जल्दी कर देगा। एक यूजर नेम पासवर्ड जितने मर्जी अकाउंट डाल दो। अभी हर they're working on something cool. Okay, let's do this first. Sorry. Yes, you can trade inside Canada on a visitor visa on Bullnox. If you are from India, you can do even legends, no problem, but not from Pakistan. Because of the US restrictions, many countries are not allowed to trade. हाँ जी, नॉन प्रोफेशनल नाम डालें, सब कुछ करें तो अब आपका नहीं, वो इस पे नहीं है, इस पीडीएफ में नहीं, ऊपर 2 बॉक्सेस होंगे ऊपर। नहीं, ऊपर जहाँ काली जगह है, बिल्कुल। आप जरा स्क्रॉल पेज पे करें, इस पेज पे नहीं, सॉरी, नीचे यहीं से नीचे आ जाए। इसका कोई ये पीडीएफ ही है टोटल। अच्छा, वो यहाँ मांग रहे हैं नेक्स्ट, या और यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस ऊपर हैं और यहाँ साइन कर दें, तो अब आपका टेक प्रॉफिट का अकाउंट खुल गया। तो पहले 1500 करें, फिर 1500 के बाद जितना मर्जी निकालते रहे। टारगेट बढ़ा है 3000, टारगेट पीए 130 था, हर साइज सेम। देखो ये उससे बेटर इसलिए लग रहा है इस टाइम पे कि 1500 बनाए एंड यू डन द नेक्स्ट डे। यस, नहीं, वो 2 दिनों में, 5 दिनों, ये 5 दिनों में है सर, पीए 1 दिन में। पीए हाँ, यस। ये 1500 सर, वो सेम लेजेंड वाला ही है। Cloud drive, we're gonna fix this up. चलो इतना
अच्छा, अब हो गया साइन। अब जाएं निंजा ट्रेडर में, जाएं कनेक्शन में, जाएं न्यू निंजा ट्रेडर पकड़ें और ट्रेडर वाइट का यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, प्रोफाइल का नंबर माई टेक प्रॉफिट रख दें। नो प्रॉब्लम जी, एटलीस्ट एनी डेस्क चल रहा है। वो तो हमने करेक्ट कर दिया। आप बोला था ना दूसरी बंदा है इसका नहीं हो रहा। हाँ जी, मुझे यही लगता है कि अच्छा सर, वेलकम टू हमारे सुपर एरियाज के मेंबरशिप पे फ्लोर पे। 2008, मैं आपको उसका क्विक वर्जन बताऊंगा, घंटे वाला नहीं। 2008 से हम यहाँ पर हैं। हमारे पास 15 एम्प्लॉयज हैं, 13 मेंटर्स हैं तकरीबन जो फुल टाइम सिखाते हैं। 12,000 से ज्यादा ग्रेजुएट्स हुए यहाँ पर 2008 से। हमारे पास 2 ट्रेडिंग फ्लोर हैं, एक यहाँ एक ट्रिनिटी ड्राइव पे, और 4 डेटा एनालिस्ट हैं जिनमें एक मैं हूँ, डैनियल हैं, 2 और हैं। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो पिछले पंजाबी ठीक है ना, ये उर्दू से सही जा रहा है, ठीक है। तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपको मार्केट को प्रेडिक्शन में मदद देता है। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, देखिए हमारा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर से है। डैनियल ने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम किया है, फ्लोर पे बैठे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं। तो हमारा कंपनी का काम ट्रेडिंग से ज्यादा सॉफ्टवेयर का है। और ट्रेडिंग में सॉफ्टवेयर इसलिए एआई का चलता है कि वो आपको अगली मूव बता देता है। सारे का सारा कुछ मैथ पे है, कोई रैंडम चीजें नहीं हम कर रहे। तो हम बहुत साइंटिफिक तरीके से एक एनालिसिस निकालते हैं। देखिए, कोई भी ट्रेडर होगा ना, आप मुझे एक ब्लाइंड पर्सन ला दें, एक जानवर ला दें, बिल्ली ला दें, उसको एक 2 बटन रख दूंगा लॉन्ग और शॉर्ट के, बटन दबाएगी, या प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। वो भी 50% ठीक हो सकते हैं, ब्लाइंड पर्सन भी 50%, जिसने आज तक ट्रेडिंग नहीं बताई और मैं उसको कहूँ यार आंखें बंद करके एक बटन दबा दो, या उसकी फेवर में जाएगी या खराब जाएगी। ठीक, दुनिया की हर चीज, हर स्टॉक, हर चीज या ऊपर जाती है या प्राइस नीचे जाती है। तो हमने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया कि 50% से ज्यादा आपके पास चांसेस हो एक ट्रेड को डालने के। कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया में ऐसा नहीं है जो 100% ही टाइम सही होगा। ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ये सारी पार्ट ऑफ द सिस्टम है। हमारी गोल ये है कि आपको 70%, 80%, 90, 99% तक एक्यूरेट लेके जाए। अब 2008 से हम ये काम कर रहे हैं कि 18 साल तो इसी में हो गए, 4 साल से मैं टीच कर रहा हूँ। डैनियल 40 साल से शिकागो मर्केंटाइल के साथ भी है, सब कुछ है। अब हमने इसको इतना रिफाइन कर लिया कि आज सुबह हमारे सॉफ्टवेयर ने कुछ नंबर प्रिडिक्ट किए। हम एल्गो है, हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं। ऑनलाइन लोग कहते हैं हम शायद कोर्स बेचते हैं, कोर्स नहीं बेच रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर सिखाते हैं आपको। कोर्स पता क्या होता है? मैं यहाँ खड़े होकर 1 घंटे का लेक्चर दे दूं, ट्रेडिंग क्या होती है आपको बता दूं, लेकिन वो फिर आप कहेंगे यार मुझे फिर ट्रेडिंग व्यू पे सीखना है, मुझे कहाँ सीखना है, मुझे ये तो पता नहीं है। आप मुझे ये तो बताओ डाइवर्जेंस क्या होती है। अगर पता हो डाइवर्जेंस तो लगती कैसी है वो भी बताओ, और लगा के भी दिखाओ। तो हमने एक ऐसा ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो रेडीमेड सिस्टम है आपके लिए। आपने ऑन करना है, आपको एक लाइन नहीं करनी डरा, आपको स्ट्रेंथ की लाइन नहीं देनी, डाइवर्जन की लाइन नहीं देनी, हायर हाई नहीं देना। मैं आपको एक टेक्निकल चीजें दे रहा हूँ, 25 चीजें आपके लिए हो रही हैं जो रेडीमेड है। हम कंप्यूटर के मदद से आपको बता देते हैं। हमने सॉफ्टवेयर लिखा है लेकिन कंप्यूटर माइक्रो नैनो सेकंड में कुछ एनालाइज कर रहा है। आज उसने एनालाइज किया जो हम 18 साल से करते हैं कि अगर नैस्डैक या ईएस या गोल्ड या रसल या 15 मार्केट हम करते हैं, अगर गिरी तो कितनी गिर सकती है, अगर चढ़ी तो कितनी चढ़ सकती है। ये एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन होती है। देखिए वो वेदर लिखा हुआ है कि संडे को वेदर होगा 8 डिग्री या 5 डिग्री या -5 डिग्री सेल्सियस। वो गॉड थोड़ी है कहीं से ले आए हैं। वो क्या करते हैं, वेदर का मॉडलिंग ऐसे होता है कि वेदर में आप विंड प्रेशर देखते हो, ह्यूमिडिटी देखते हो, टेम्परेचर देखते हो, सीजन्स का कहाँ से आ रहा है, विंटर है, समर है, तो उनका एक वेदर मॉडलिंग प्रेडिक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बेहस पे वो एक्यूरेट होते हैं। 680 पे आप सुनते हो वो कहते हैं आज का जैकपॉट ये है, अगर इससे ना हिट हुआ हम इतने पैसे देंगे। आप रोज सुनते हो, तो वो भी तो आपको एक नंबर देते हैं ना, वो देते हैं कि वेदर इस, या अगर ऊपर गया तो इतना जाएगा, नीचे गया तो इतना जाएगा। हम भी 15 मार्केट्स के बारे में एक प्रेडिक्शन करते हैं, 18 साल से करते हैं। हमारे आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 12,000 मेंबर हमारे यूज करते हैं। आज हमने कहा अगर नैस्डैक गिरती है तो थोड़े से इधर थोड़े से इधर, तो हमारे पास ट्रेडर वो भी है जिसने कभी ट्रेडिंग नहीं की
और वो ट्रेडर भी है जो 20 साल से ट्रेड कर रहा है। गैप हर चीज का है। एक ट्रेडर के पास $16 है, एक के पास $1,16,000 है, तो वो भी ट्रेडर है। किसी कोई 1500 का अकाउंट लेता है तो क्यों 3 लाख का लेता है, कोई रियल पैसे 1 लाख। हम सारों को एक स्टेज से गुजारते हैं। आपके पास अगर आपके, क्योंकि हम फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं, और उसके आज कंप्यूटर ने कहा नैस्डैक को ये 500 से 525 के दरमियान बाउंस होना चाहिए। अब आपकी हमारी कोई स्किल है ना जिसकी बेस पे हमने दिया है। हमने क्या हवा से उठा ला ये नंबर, या हमने सोचा कि यार आज 500 लिख देते हैं या कल 600 लिख। हम सुबह बैठते हैं, पूरी रात का एनालिसिस कंप्यूटर का एल्गोरिथम करता है, आपके लिए फ्लोर बना हुआ है, आपको लाइव स्ट्रीम जा रही है, तो पूरा इंस्टीट्यूट है। ये वन मैन शो नहीं है, ये नहीं है। हर सैटरडे को प्रेजेंटेशंस होती हैं, लेक्चर्स होती हैं, एक्सपीरियंस है, साइकोलॉजिकल हो, फिलोसॉफिकल हो, टेक्निकल हो, एजुकेशनल हो, सारी चीजें हमने आपको कवर करनी। तो वेलकम हमारे इंस्टीट्यूट में। अब हमने आपको सिखाना है ये सॉफ्टवेयर क्या। ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, लाइव मार्केट के अंदर आपको लाइव एनालिसिस दे रहा है। ठीक है, 12,000 ट्रेडर में कोई मेरे सामने ले आए और कहें कि यार आप, मैं ये, हमारा ये चैलेंज है, आप हमारे सॉफ्टवेयर से पैसे ना कमा सके, लाइफ इज आउट देयर डिफिकल्ट। क्योंकि जितना मुश्किल आपको ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ डाइवर्जेंस की लाइन लगाना है, उसको सीखना है। लोग आपको सिखाएंगे यार 5 मिनट की कैंडल में ये पैटर्न होता है, ये इंगल्फिंग होती है, ये होता है। 15 मिनट की कैंडल में एच बनता है, फिर पी बनता है, फिर फ्लैग बनता है। ओ भाई, किसी की कुछ जरूरत नहीं है। हम आपको कहते हैं भाई ग्रीन हो तो बाय करो, रेड हो तो सेल करो, इतना बेसिक कर दिया। उसके बाद इस पॉइंट पे आए तो बाय कर लो, इस पॉइंट पे आए तो सेल कर दो। चीजें सारी सिखा देंगे लेकिन इजी कर देंगे। अभी सॉफ्टवेयर ये कह रहा है ऊपर लाइन लगी है, ये डाइवर्जेंसी ट्रेंड चेंज होना था, हो गया है ना। तो जो हमने कहा है हुआ है यार। तो ये हमारा कोई स्किल नहीं है, मैथ है, ये मैथ का कंपटीशन है। हम भी रॉन्ग हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर, कोई दुनिया में ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपने 10 ट्रेड डाले और 1 साल डाले एवरीडे और हर ट्रेड सही होगा। हमारा गोल है आपको रोज का $200, $300, $400, $500, $1000 बना दें। हमारी जॉब इतने में। हम $100 की आपको रिटर्न गारंटी देखते हैं, अंदर आपने साइन किया है कि भाई आपको एटलीस्ट हमारा सॉफ्टवेयर $100 रोज के बना देगा। ठीक है, फिर भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने सारे ट्रेडर के साथ बैठे, मैं आपको कहूंगा 99% इमोशन है, 99% इसमें डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, फिर जाके कोई और बात होती है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी लोग इस तरह की ट्रेडिंग से वाकिफ नहीं है। ठीक है, लोग ट्रेडिंग से वाकिफ हैं, यार स्टॉक में पैसा डाल दो, बढ़ जाता है, आ जाता है, वो डे ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो सामने इसमें ये होता है कि आप एक ही दफा आप ने एक ट्रेड डाला, नैस्डैक 500 से आई, 520 में निकल गए, आपके 400 बन गए, आपका बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि इतना तेज पैसा इतनी जल्दी आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, आपने कहा कि यार ये क्या बात हुई कि ये मैंने कुछ किया भी नहीं। मुझे उस दिन किसी ने स्टेटस भेजा, लिखा हुआ था यार ऊबर में $90 कमाने में ज्यादा मजा आता है, यहाँ 300 का मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा फिर तुम ऊबर चलाते रहो, ठीक है, मजा लाओ ना, यानी कि ठीक है तुसानू उत्थे मजा आ रहा है, मैनू इत्थे मजा आ रहा है, ना मैं रहूंगा ना आप रहोगे। तुहानू 90 8 घंटे। मेरा भाई है, मल्टा मिलियनर है, ओन करता है, बेस्ट है। कहता है यार कई दफा ना आप, मुझे लगता है कि तुम जान नहीं मारते। मैं कहता मैं 20 घंटे काम करता हूँ, मेरी सुबह वीडियो आती है सुबह के 3 बजे, मुझे इस काम का शौक है, मेहनत दोनों में है ना। मुझे सिर्फ बाहर जाके सबसे मेहनती बंदा पता कनाडा में कौन है? जो ट्रक चलाता है, 52 फुट का ट्रक। जिंदगी मेरी भी रिस्क में, आपकी भी रिस्क में। और कैलिफोर्निया में बच्चों को आपने महीना नहीं देखना। मेरा दोस्त था, मैं कहता, बड़े मजे की बात सुनाई, कहता यार मेरे बच्चे ऐसे ऐसे बड़े हुए। मैंने कहा यार क्या मतलब है कि बच्चे तो ऐसे ऐसे बड़े होते हैं। कहता है सोते हुए देखे, वो कहते सुबह देखे, अच्छा इतने थे, फिर इतने हो गए, फिर इतने। तो जितनी मुश्किल जॉब ट्रक ड्राइविंग की है ना, kudos to your industry, your family, आप बहुत लोग, मैं जानता हूँ आपकी कम्युनिटी से चलाते हैं, मुश्किल काम है। अब यार एक बंदा है ट्रक चलाता है, 7,000 कमा लेगा, 8 कमा लेगा, 5 कमा लेगा। मुझे फील होता है मैं अगर ये स्किल सीख गया हूं तो मुझे लाइफ टाइम मार्केट, अभी इंटरेस्ट रेट का मुझे कोई परवाह नहीं है, बढ़ा है इंटरेस्ट रेट, नीचे आया है, मुझे पता है यार मेरा रोजी रोटी लगी हुई है फंडेड से। तो एक स्किल आपको सिखानी है, लेकिन सबसे मुश्किल काम इस स्किल का यह है कि आपने अपने हाथ को कंट्रोल करना। I'm good, sorry, I didn't, I just got better, so next time. So इसमें जो सारे का सारा जो इसके अंदर जूस है ना,
ट्रेडिंग की दुनिया का, ख्वाब ऑप्शंस करते हो, फ्यूचर्स करते हो, स्टॉक्स करते हो, क्रिप्टो करते हो, आप एक टारगेट से आएंगे। मेरा टारगेट इन्होंने 250 करके वापस दे दिए, इट्स ओके, बार बार मुझे यही याद आएंगे, सामने बैठे हैं तो वो 250, कल भी 250, कल फिर 100, मैंने आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई है। नहीं, कोई बात नहीं। देखें, अब फायदा ये है, आप लोग वन ऑफ द लकीएस्ट बैचेस हो। 3 साल पहले बैच हम लाइव अकाउंट पे ट्रेड करनी पड़ती थी, 1500, 2000, 3000 डालने पड़ते थे, उस वक्त प्रेशर ज्यादा होता था। अब आप गलती करते हो ना तो अब संभल जाते हो। आप 5 दफा भी गलती करो, 10 दफा भी करो ना, तो नुकसान कितना है का, अगर आपका एक अकाउंट है $25 से $30 का, बुलनॉक्स का हुआ $16 का, तो आप संभल जाओगे। होता ये है कि जो पिछला बैच था ना, और कई लोग वापस आ रहे हैं इसको फंडेड ट्राई, क्योंकि आप 100, 200, 300, 1000 के बाद ना 1-2 हज़ार आप छोड़ जाओगे। आप कहोगे यार, फिर आप ब्लेम करते हो। हमेशा मैं कहता हूँ 4 गालियां पड़ती हैं, एक सॉफ्टवेयर को, इंडस्ट्री को, मुझे, डैनियल को, कि यार ये ना मुझे ट्रेडिंग में लगा दिया। अपनी गलती नहीं बिलीव करनी कि यार मैंने गलती की है और मैंने ट्रेड गलत डाला, ग्रीन था मैंने रेड कर दिया, रेड था मैंने सीखा नहीं। तो मेजोरिटी लोग इंडस्ट्री को इसलिए कि किसी ने कहा भाई टेस्ला खरीद लो, अब जिसने 484 पे टेस्ला खरीदा है वो रो रहा है, क्योंकि टेस्ला 397 का इस वक्त, लेकिन जिसने 213 पे खरीदा है वो हंस रहा है। कोई ना कोई लूज कर रहा है, कोई ना कोई अर्न कर रहा है, राइट। हमने ये कहना होता है यार, हमने डिसीजन एक लॉजिक पे करना है, मिड बैंड भी लेना है, एरिया भी लेना है, स्टॉक भी लेना है। तो इस सॉफ्टवेयर में हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये प्रेडिक्शन हो रही है लाइव, 23 घंटे हो रही है, और कंप्यूटर आपसे ये कह रहा है कि यार यहां से बाई करो, यहां से सेल करो, और हमने आपको 7 कंडीशन दे दी है कि यार ये 4 चीजें मैच कर लो। अगर आपकी ये मैच होती हैं आप ट्रेड डाल दो, अगर नहीं होती ट्रेड नहीं डालना। एरिया आ जाए ट्रेड डाल दो, मिड बैंड का ये रूल है, डाइवर्जेंस का ये रूल है, 4.75 का ये रूल है। मैं आपको इसकी कोडिंग से लेके इसका एपीआई तक सब सिखा सकता हूँ। ये आपका गोल है, या आपका गोल है कि आपने पैसे कमाने, तो वो मैं जो आपका गोल है, मैं आप मुझे कहें खोल के बताओ कि यार सुपर एरियाज की एपीआई क्या है, मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के साथ डालनी है, मैं वो भी कर सकते हैं, राइट। सो गोल पे हम आपके लिए हेल्प एब्सोल्युटली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, आप इसको खोल लें, बैठें, देखें, कुछ बिगिनर्स वीडियोस हैं जो सारी आपको करनी पड़ेंगी, तो उसके बाद ये सारा सिस्टम ये चलता है। तो इसमें अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं ऑफ कोर्स आई एम मोर देन हैप्पी टू। सॉफ्टवेयर सीखना है आपने, लाइक इसका इंजीनियर्स हमने कर दिया काम अपने ऊपर। ऐसे अब देखें, आप कभी गए हो अपना एक्सरे कराना, हड्डी टूटी हो तो डॉक्टर पहले कहता है एक्सरे करा के आओ। जो वहां टेक्नीशियन बैठा है ना, उसको ये नहीं पता एक्सरे मशीन का अंदर डेप्थ क्या है, किसने बनाई है, कैसे वेवलेंथ जाती है, कैसे स्कैन होता है, उसका जॉब है। आपने उसने अपनी क्रीम मलनी है, आपको टांग को, उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, भाई न्यू पेशेंट आए उसको तो पहले रेडिएशन के वो पहना दो, उसको ये मास्क कर दो, उसको 6-7 उसको कहो कि बाजू टूटी है, ये टांग टूटी है, वो एक्सरे ले। उसको ये नहीं पता कि उस डॉक्टर ने उसको स्कैन के पढ़ना कैसे। तो डॉक्टर वाला काम बाद में आएगा, पहले आप टेक्नीशियन बन जाओ कि मशीन यूज करनी सीख लो। अब आपको अब जो भी ट्रक चलाता है उसकी एरोडायनामिक्स ट्रक की, या उसका वेट लोड का बैलेंस, या उसके अंदर जो ट्रांसमिशन हो रही है, आप शुरू में जाके सिर्फ उसका ऑपरेटर बनते हो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हो यार कि चेन्स में डालेंगे तो ये होगा, इस तरह की चीजें, ऑयल, तो आप आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर की तरफ जाते हो। तो शुरू में आप टेक्नीशियन बनो, शुरू में आप फिर आप डॉक्टर भी बन जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। मेजोरिटी लोगों का यहाँ गोल है यार रोज के 200 बन जाए, 300 बन जाए, 400 बन जाए तो मेरा एक इजी हो जाएगा। यहाँ वही 200 आपको हर 3 माह बाद जो है ना वो 30,000 भी दे देगा। आपने एक चीज लेके आनी, वो है डिसिप्लिन, बाकी सब का सब हम कर देंगे। तो ये है हमारी जर्नी। ये सर देखो, उन्होंने निंजा ट्रेडर 8.1 दी ना वीडियो देखनी पैनी है, क्योंकि वो चार ट्रेडर ऑन करना है, ठीक है। चार ट्रेडर ऑन करके जरा एटीएम बनाई है असी, वो 4 वीडियो प्लीज देख लो, वो फिर कैचअप हो जाओगे।
क्योंकि देखो पहले तो उन्होंने दिखाना है कि निंजा 15-10 की ਹੁੰਦਾ है, 30-20 की ਹੁੰਦਾ है, बाय की ਹੁੰਦਾ है, सेल की ਹੁੰਦਾ है। वो अगर कभी अगला बैच जो आएगा ऑलमोस्ट हुन लगेगा इंग्लिश का 1-2, फिर लगेगा 3-4, 15 फरवरी ਨੂੰ फिर लेक्चर 1 होएगा। नहीं इंग्लिश ते 6 है, हिंदी दी भी 6 हो जाएगा। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ 30-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਆਏਗਾ। 16 ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ओरिएंटेशन ਫੁੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 1 ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट सैटरडे इंग्लिश का है, नेक्स्ट संडे इंग्लिश का 2 क्लास है, फिर तीसरी क्लास है, फिर चौथी। ਜਿਹੜਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਬੈਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं हो रही क्लास है, 4 क्लासां ही ने, क्लासां 4 ही ने। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬਣਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਏਰੀਆ ਦੀ, ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਟਿਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਫੋਰਗੇਟ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। वो एक ऑर्डर ला दे, वो बाय सेल खुद होके खुद ट्रेल करता रहेगा। superareas.com। सॉरी हाँ टॉप स्टेप नो, टेक प्रॉफिट। टॉप स्टेप हैज a daily limit, you that sucks man, no I don't like top step। so my funded futures doesn't have it, take profit। here you go guys, our volatility is beginning 1 o'clock, the market is crashing fully, क्रैश हो रही है जी पूरी। Nasdaq जो है ना काम तेज होना शुरू हो गया। 1 o'clock guys, 2 o'clock we have next all the stop losses are being hit, so be ready, 1 hour to go, excitement। so pressure is down, remember pressure is down। जा सकती है सर, एक्सट्रीम लो से भी 600 जा सकती है, मैं ये कह रहा। नहीं सर, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ट्रेड नहीं पाना, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ट्रेड इंटरेस्ट रेट मैन FOMC 230 and then in the evening Microsoft, Meta, Tesla earnings, so quite a bit exciting। आज लोग पैसे भी कमाएंगे, एक्सपीरियंस लोग डायरेक्शन देख के माइक्रो से खेलते रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन के साथ हाँ जी हाँ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। चलो 1 बजे कैंडल क्लोज हुई है ना आपकी, और अब काम शुरू हो गया, ये आज तबाही फिरनी है। ये लास्ट टाइम भी डाउन ही गया सी, लेकिन उन्होंने काफी काम खींच दिया। बिल्कुल नैस्डैक तो आ गई जी, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर गए जी। नैस्डैक फुल फॉल, थ्रॉटल डाउन में। अगर अर्निंग्स भी पूरी हुई तो नैस्डैक तो ले जाएगी नीचे 20,000 तक। चलो अभी भी 1300 पॉइंट का गैप है, बट लेट्स सी। Oh yes, I am not taking no trade whatsoever, क्योंकि S2 हो चुका है ऑलमोस्ट, ये याद रखें। एक्सपेक्टेड लो पे पहली दफा आ रही है ये, और आपका S2 इधर तोड़ दिया उसने, नैस्डैक ने तोड़ दिया। नहीं आज तो कुछ करना नहीं है, लेकिन नॉर्मल में एक्सपेक्टेड लो से हम बाय करते हैं नॉर्मल। यस आप करेक्ट हो, लेकिन आज कुछ नहीं करना, क्योंकि ये अगर गिर गई एक्सपेक्टेड लो से तो एक्सट्रीम लो जाएगी, और एक्सट्रीम लो से गिर गई
तो हमें घर ले जाएगी। ये इतना तो इस अकाउंट आपको लगता है अगर आपने अगर तो ये इशू है। तो इस वक्त कोई पैसे मैंने एपेक्स में 2000 बनाया हुआ है, वापस नहीं देना भाई। ना ही मैंने बुलनॉक्स रिस्क करना है 2500। आज वो ग्रीड आ जाएगी कि जल्दी है, आज जल्दी निकल सकते हैं। अगर तो ठीक है, किस्मत में है ना, या अब गैम्बल हो रही है। ठीक है, अब देखिए आप कहते हैं, हम कहते हैं गैम्बलिंग नहीं करनी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आज बाहर तूफान है, आप कहते हो यार देखो शायद आज काम बन जाए, तो 50% पे हमारा आज रिस्क चला गया है। ट्रेड 50 है, या तो गेम ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये देखिए मिड बैंड पे आई है और यहां से 2 पॉइंट दे गई आपको, कंग्रेचुलेशन। जिसने ये गैम्बल लिया पैसे ले लिए, इतनी सी बात है। हाँ जी, मिड बैंड पे टच हुई, लोअर लो से आई, बात खत्म हो गई। तो पैसे बनते भी हैं, उड़ते भी हैं, ये अब गैम्बल हो रहा है। हमारे कंप्यूटर ने प्रोडिक्ट किया था कि आपने, हमारे जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर कह रहा है कि 6052 से सेल करना था। जिसने सेल किया वो खत्म है, इतनी तेज है। अब यहां से डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि हायर लो लगा है। लेट्स सी, लेकिन एक्सपेक्टेड लो की तरफ आ गई है। 6040 से हमारा एक्सपेक्टेड लो शुरू हो रहा है। अब यहां से 40 से भी नीचे जा सकती है। 40 के बाद अगला नंबर क्या है नीचे? 30। हायर लो लगी, अब यहां से ट्रेंड चेंज होगा। 3020 का मिड बैंड, वही काम अब देखे ना, फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा है। चेंज कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ स्पीड आ गई है उसके अंदर। यस देखें, वो मिड बैंड टच हुआ। लेट्स मिड बैंड 3020 का टच होके आपको 2 पॉइंट दे दिए। 2 पॉइंट आपने यहां से भी ले ली। तो नहीं, मैं यस देख रहा हूँ। यस का 3020 में 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं। ये देखें जी, एग्जैक्टली। तो दिस इज द स्पीड। अब ये स्पीड चलेगी मंडे तक, क्योंकि इसके जो अगर जलजिला आया उसके आफ्टर इफेक्ट आपके माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, नैस्डैक यहाँ लार्ज ट्रिगर हो गए। और अब देखते हैं 53 पे, ये पहला रिवर्सल 53 का है जी। ये लेकिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपका कर रही है, तो वहीं फेर रही है 336। लेट्स एनालाइज दिस। 360. That's why we don't talk stocks. Sorry, we don't talk stocks on our streams. Only Nasdaq futures and ES futures because the market is super volatile. देखें सर, आपका S2 बड़ा प्यारा चला। 300 तक आना चाहिए एक्सपेक्टेड लो। अब देखें पहला रिवर्सल कब आता है। पहला रिवर्सल कंप्यूटर कह रहा है 55 तक है। Let's see, 55. अब कंप्यूटर ये कह रहा है 6055 आपका है। बाइक Okay, I'll wait for your call. But then other parts need to be paid as well. So let's touch base at 3 o'clock and let me know when you pick up the job.
वापस ले गए जी ऑलमोस्ट 397 से नहीं 367 वापस R2 की S2 की तरफ जा रही है पूरी स्विंग डायमंड शेप की तरफ बन रही है पूरा का पूरा कितनी बड़ी कैंडल दी है जी ऑल द वे फ्रॉम S1 डाउन टू मैं देख रहा हूँ 60 तो अब जो भी मसला होगा 2 के बाद So let's see if it gives us that first retrace 6062 or 6063. बहुत स्पीड है जी ये 30-20 का मिड बैंड देखते हैं नो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है Any distance. ये लेते हैं ना हाँ हाँ ले रहे हैं Okay, that's better than legends.
मेरा ख्याल है बड़े का पूरा है $2 होगा। हाँ आई ऐसा तो $6 है, 581 एक बड़ा लेके तो देख लेते हैं। अभी पूरा लेना नहीं आता, हाँ नो प्रॉब्लम। लेजेंड वालों की कॉल आएगी, बैनर नीचे क्यों गया हमारा? फिर बैनर पे फाइट होती है क्योंकि ट्रैफिक इतनी है। हाँ हाँ, कहता मुझे बताओ करना क्या बैनर पे। अभी तो मैं देखे एपेक्स को कितना नीचे ले गया हूँ, तो छुप गया है ना, क्योंकि मैं यार हमने प्रमोट वो करना है जो आपके लिए फेवरेबल हो, राइट? तो मुझे बैनर की लोकेशन के वो कहता है कि मुझे सिर्फ बैनर ऊपर कर दो, और मैंने कहा देखो यार तुम, हाँ नहीं मुझे, मैंने उसको ये कहा ये मेरी 150 वाली लिमिट उठा, ये जो 150 मिनिमम वाली है ना, ये लिमिट उठा, मैं बैनर ऊपर वापस ले आता हूँ। हाँ मैं क्या यार 150 वाली है कि तुक पड़ता है कि हाँ पहले नहीं सही। हाँ नो वी आर इन पावर, हम होलसेलर्स है ना, ट्रेडर्स जाता है। अभी वो उसके पीछे उसको मैं इमेजिन करें हम 1000 बंदा भी थे, एक क्वेश्चन है 50,000 उसको चला गया, ठीक है चला गया ना, उसमें से अगर 1000 में से 800 भी पहला अकाउंट फेल कर दे, उनको फ्री का पैसा है, राइट? तो 40-50 उनको वो सर कहते हैं यार आप प्रमोट, मुझे इस वक्त एपेक्स वालों ने इतनी कि मैं कहा भाई आप बहुत पीछे रह गए हो, आप तो लाइव थ्रेशोल्ड पे पहले खत्म करो ना, फिर हम अगली बात करें। तो ये आप साइन इन कर दें जी ईमेल से, तो ये मेक सेंस। लाइव थ्रेशोल्ड आजकल के यार $50 की जगह तो बने ना, या फिर अगर ज्यादा डर लगता है माइक्रो में करो। नैस्डैक नहीं जी, नैस्डैक नहीं, आप नैस्डैक के लिए रेडी नहीं है। नैस्डैक में उड़ाए, नैस्डैक में चले गए। नहीं नैस्डैक मैंने उन्होंने क्या है, पहला बैच नो नैस्डैक दसना ही नहीं है एरिया, ठीक है? नैस्डैक करो, अज तक वेट करो 500 ते आंदी सी ते बाई करना सी बस। मैं आज तक हिम्मत नहीं है, अगर मैं दूसरे की इन्होंने लिटरली हाथ ऐसे करके किया, यहाँ से सेल तक, यहाँ से निकल गया, मैं फ्री भी नहीं करता। लिटरली इन्होंने कहा कि यहाँ से आ जाओ, यहाँ निकल ना, नहीं नहीं, ये दोनों तरफ जहां जहां उसको स्टॉप ऑर्डर मिल रहे हैं ना, स्टॉप ऑर्डर, क्योंकि स्टॉप ऑर्डर वो ये सारे बुल्फ्स देख सकते हैं, उनको नजर आता है कि कितने नजर। अब इमेजिन करो आप यहाँ खड़े हो और आपके पास वेल्थ है अनलिमिटेड, आपने सिर्फ जॉब है स्टॉप ऑर्डर उड़ाते हैं जाके, तो इस साइड में खेलना शुरू, इधर थर्ड स्टॉप ऑर्डर उड़े, ये जो मार्केट मूव हो रही है स्टॉप ऑर्डर फिनिश हो रहे हैं। तो उन अब लेकिन उनको ये नहीं पता ये स्टॉप ऑर्डर स्टॉप लॉस के हैं या ये स्टॉप ऑर्डर, क्योंकि आप नहीं कि वहां से बाई भी तो हो सकता है ना, कुछ लोग तो वहां से बाई के पे बैठे हैं, तो लेकिन हर बंदे ने स्टॉप लॉस लगाया होता है, और आज ही सारों के स्टॉप लॉस उड़े होते हैं, क्योंकि हाँ क्योंकि जो स्पीड आ रही है। तभी तो मैंने ये लिए, अब उसमें माइक्रो में उठाता फिर मैं थोड़ा आज आईसीयू में टेक प्रॉफिट में ईएस का $2 है, या सॉरी 3 लॉट अलाउड है। नहीं
ट्रेड का ये नहीं पता, ये मुझे ऑनेस्टली, ये देखिए ये मिड बैंड चल गया है, बेहतरीन फर्स्ट रिवर्सल, लेकिन वो बीवी डाउन से रहता है। ठीक है सर, नो लेकिन नॉर्मल मिड बैंड बीबी थले आन गया, सिर्फ गैप ट्रेड च नहीं आन गया, नॉर्मल मिड बैंड ते हाँ एग्जैक्टली हुन देखो ए मिड बैंड तो लिया 2 पॉइंट लेके, सॉरी मैं साथ साथ एक और एनी डेस्क करा, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें, सिन नंबर डालना है कि आप यूएस के सिटीजन नहीं है, तो अपना फोन नंबर डालें, आईडी वेरीफाई करें। तो वो लास्ट डाल दीजिएगा आपका, आपको एक एसएमएस आएगा, थैंक यू जी, ओके सर, थैंक यू। नहीं कमान तो बाद बढ़ जाएंगे, नहीं करते हैं ऐसे ही ना, कोई स्टार्टअप सब का सही है, ज्यादा कमाई इससे सब ठंडे हो। अमन जी के फ्रेंड आए थे, लेकिन शादी के लिए छुट्टी थी, मंडे तो नहीं आ रहे, वरना रेगुलर हाँ करो, कभी करते तो उधर ले वो कर लो ब्रेक तो सत्य कर देने, जैसे एंट्री देखना हमें पता है कि अभी कोई नहीं कार्य होगा, लेकिन तो एफआई करने ही है, लेकिन वो ब्रेक कर सकता तो रही है बहुत ना कर देगा सब आपसे नहीं करेगा, आपसे नहीं करेगा तो है ही नहीं कम सोचो फोन नहीं रहना हो सकता टाइम को चेंज नहीं, ऐसे सुना है ये अपना चलने तो हो गया जी, ठीक है, क्रिएट न्यू, मैं एक बारी लॉग आउट करिए तो
sign out. It's $5. 26.5. Is it one? Yeah. नहीं, साढ़े 400 का स्टाइल दोबारा आ जाएगा। ये जिस तरह ग्रोसरी स्टोर में जाओ ना, वो कहते हैं कोक लगाओ या पेप्सी लगाओ, क्योंकि ड्रिंक तो ड्रिंक है ना, बंदे ने जहाँ ठंड ड्रिंक में उठाना है। तो गैस स्टेशन में सारी फाइट होती है शेल्फ स्पेस पे। शेल्फ स्पेस किसकी कहाँ होगी उसके लिए वो पे करते हैं कि हम सो यहाँ होता है कि इस वेबसाइट पे कहाँ पर जाके कौन सा बैनर क्लिक होगा तो नहीं दो चीजें देंगे, एक सिगरेट, हाँ यस वो कहते सारा दिन खत्म कर लेंगे, कहते तेल ही क्यों कुछ लगा, कहते वो चीजें हम बड़ी कमाएंगे, बाकी जितने आइटम ने सारे डबल रेट पे। बिल्कुल आता है जी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक जी, बस डिसिप्लिन से रहें प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं आपको एंड का रिजल्ट भी बता देता। नहीं ये तो छोटा सा लेसन है ना, मैं आपको बताऊं होगा ये, इवेंचुअली आप गिव अप कर जाओगे। देखिए 50 करते करते आपने 100 काउंट उड़ा दिया। एक एग्जांपल है, ये $5000 बनता है, पता लगा 5000 इन्वेस्ट कर दिया, 1500 भी नहीं आया। ये मैथ नहीं सही। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसे टाइम पे 3 अकाउंट के बाद 2 के बाद एक, ये यार मेरी गलती कहाँ हो रही है, अपने आप को एनालाइज करें ना, गलती हो रही है यार, मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ या मैं बिहेवियर नहीं कर रहा। मैं जनवरी 6 से यहाँ बैठा हूं, जब से आया हूं, आज 28 हो गई, एक भी दिन एरिया फेल नहीं हुआ। इस वक्त 2025 का हमारा रिकॉर्ड 100% चल रहा है, और मैं 18 साल से कहता हूं हम 90% से ऊपर है। तो एरिया आपको दिया गया है, मिड बैंड आपको दिया है। मिड बैंड हम कहते हैं 10 लेंगे, 9 से 11 के दरमियान 7 चल जाएंगे यार। एक तो 9-16 पे चल गया, जो आते ही विक्रम जी ने देखा कि वो सेल पे हुआ था। तो एंड पे सिर्फ आप ये जब 5, 10, 15, 20 अकाउंट अगर खुदा ना खास्ता जाएं, अपने आप को देखें, कॉन्टेम्पलेट करें कि भाई क्या मसला है। हम लोग कॉन्टेम्पलेट करते थे जब ट्रैफिक $500 CIBC से भेजना है ना GFF को, यार नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी कि ट्रेड खुला रह गया। तो एंड में इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। हाँ माइक्रो कर लो, टेस्ट कर लो, पहुंच जाएंगे। या माइक्रो में लॉस डाला नहीं, हाँ पैसा डाला तो कराओ, लेकिन लॉस की डाला नहीं तो अकाउंट नहीं उड़ेगा अकाउंट। तो क्योंकि अब हम पीए में माइक्रो करते हैं, क्योंकि 1500 का थ्रेशोल्ड अगर हम आधा हो तो डबल हो जाता है। मीनिंग कि अगर एक नैस्डैक डालूंगा, वहां मैं 5 माइक्रो नैस्डैक भी डालूं तो मेरा 3000 का बफर हो जाता है। मैं 2 नैस्डैक डाल दूंगा, मेरा बफर 5000 पे चला जाता है, क्योंकि वैल्यू है ना डॉलर की। मैंने बनाने कितने हैं, सिर्फ $50, $60, $70 पर डी है, तो माइक्रो से हो जाते हैं यार माइक्रो। लेकिन 100-200 गेम ये। $100 माइक्रो में कमाना $1000। यस एग्जैक्टली, यस। लेकिन आप डिसिप्लिन हो जाओ, डिसिप्लिन अकाउंट साइज नहीं है ना। बड़ा अकाउंट है एपेक्स का 3 लाख वाला, ठीक है यार, एक मिनी कर लो, 7600 है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। फिर भी 7600 का थ्रेशोल्ड है ना। हम लोग 1500 में अपने 2 मिनट हो गए हुए हैं, मैं वहां हैरान हूँ। वहां से क्या है ना, 2 मिनी पता नहीं अचीव क्या कर। और हिम्मत है भाई, मैं आपके सामने अगर माइक्रो मिनी कर रहा हूँ तो आई डोंट नो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो आ जाता है, एड्रेनलिन रश आता है। आप हर स्टेज से गुजरेंगे, हर स्टेज से। हाँ सही। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮਿਨੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ
क्योंकि वो $100 तो लॉट बन जाता है 1 पॉइंट, तो सिर्फ जानी तो प्राइस होता ही है ते, लेकिन 250 तो बात थे, बल्कि 5 माइक्रो ते आ जाओ, ठीक है यार, बल्कि 2 मिनी तो लेके, क्योंकि बढ़ गया ना टारगेट, हुण रिस्क घटाना कि यार इत्थों अगर नुकसान होया, अगर तुसी उत्थे 5 माइक्रो लाए हुंदे 1 मिनी दी जगह, बल्कि 2 मिनी दी जगह, वो लॉस पता कितना होना सी? 1 सेकंड, तुसी लाया 250 ਦਾ लॉस, स्टॉप लॉस किथे लाया सी? 1 सेकंड, 216 पॉइंट्स थे, 16 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट टाइम्स $400 ਦਾ लॉस होया उस ट्रेड ਦੇ ਵਿੱਚ, -150 ਚ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। ਮਾਈਕਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਨਐਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ $60 ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗੀ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਦਾ। ਇਹਦਾ meaning ਕੀ ਹੋਏਗਾ? Make sure in your most profitable day. एक दिन च 750 तो ज्यादा नहीं बनाना। ऐसे इनकम कर चुके हैं, नहीं कर रहे, डोंट वरी। हाँ। हाले भी अकाउंट उठते हैं, लेकिन बंदे भी यार माइक्रो में उसका कि यार $1.25 but is that 125 is better, losing 125 is better than losing $12. वो 40 का नुकसान था, 400 नहीं था। तो अगर हाँ 40 से 80 हो जाता है यार। 40 is manageable। मतलब कि माइक्रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਅਸੀਂ $200 ਐਵਰੇਜ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, पर ये लॉस की लिमिट बेरिंग पावर बनती है यार। अब आपका थ्रेशोल्ड 1500 है, 1500 में से डफर बन के भी सब कुछ छोड़ के 800 का नुकसान कर लोगे, 900 का कर लोगे डफर बन के, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर मिनी हुआ तो 8000 है। The maximum I've lost in a trade which I had to close was $780 in a micro, what is double loss? See, the market went totally against me, totally against me, which is okay. पर फिर भी मेरा अकाउंट तो लाइव था, मरा तो नहीं। It's okay. Live and learn as long as you eventually get to a point where you learn. क्योंकि discipline over and over and over. See, what you see is just negative data, na? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ रहा है। You think कि यार positive में भी ऐसे जाएगा। तो वो भी 3 point loss और अब माइक्रो में $15 का लॉस हुआ है ना, स्प्लिट द गेम। ना मार्केट आपकी है ना आप मार्केट। कल मेरे दोस्त ने कल क्या कहा, यार स्टॉप लॉस मेरा दोस्त है। मैंने कहा यार बड़ी बात की है। कहता मेरा दोस्त है, मुझे बचा लेगा, यानी कि मुझे अकाउंट ब्लो होने से स्टॉप लॉस तो मेरा फ्रेंड है, तो मुझे बचा लेगा। तो कहता मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा स्टॉप लॉस है। कि मुझसे नहीं हम नहीं, वो 4 पॉइंट के लिए सर्कल से बाहर आए थे, लेकिन वापस चले गए। कोई बात नहीं, कोई गल नहीं सर। 368 तो वापस चली, अब ये चली ऊपर, अब नहीं आती, अब जाती एक्सपेक्टेड है। 2.5 बजे 1 घंटा बचा, 1 घंटे में मार्केट ने हर तरफ से पैसे ले लिए। पैसा मत दो माइक्रो में कितना लूज कर रहा है। मिस्टेक कर दें, इनकी कर दें, मैं कर दी हूं। 50 बन गया, 75 बन गया, विदिन द 100 हो गया, बस 87 पॉइंट हो गए थे, अंदर 50 थे, वो तो सिर्फ माइनस। अच्छा मेरी बात सुनो, 8750 पे आया तो 50 को लॉक कर लो, 3750 को लॉक कर लो, 0 को लॉक कर ले, 0 को लॉक कर लो यार। तो आपने सिर्फ ट्रेडिंग फीस दी है, 12.5 लॉक करो ना, या 12.5 को लॉक कर लो कि ट्रेडिंग फीस दूसरे से निकल जाए, कम से कम लॉस तो नहीं होगा। It reaches 8750, right? And then it comes down और 200 का लॉस आपको था। जैसे ही 50 को क्रॉस किया, अपना स्टॉप लॉस लो और सीधा 50 को लॉक कर दो। क्या होगा भाई? 100 तक जाके या 87 तक जाके 50 को हिट कर जाएगी, आपको 50 बने और फिर वो 800, 900, 1000 का ट्रेड देगी। और मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। I shouldn't have put my profit stop। पर जब वो अगेन जाती है तब क्या होता है? तब तो हम ये सोचते हैं ना 50 ही मिल जाते हैं या 0 पे ही निकल जाते हैं।
So I have a very वो कहते हैं ना कि stubborn attitude. Oh, yes. I have a stubborn attitude. मैंने 8750 देख लिया है, अब वो 75 पे गिर गई है, या मैं क्लोज कर दूं या मैं अपना प्रॉफिट लॉक कर लूं, 50 का तो कर दूं ना। आफ्टर द ट्रेडिंग फी 46,000 तो आ ही जाएंगे। So it's easier now. Then there is no stress. अब कल जब मैं ट्रेड ले रहा था ना, मेरा प्रॉफिट ट्रेड हो रहा था और मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरा हाथ ये वो आपका इमोशन निकल जाता है ना। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बाय द वे, जो बहुत सारे इमोशनल ट्रेडर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। 12,000 बंदा है ना, आई वुड से 8 से 7,000 बंदा गैम्बलिंग पे होता है। पूरी दुनिया में यही रेशो है। उनके लिए जो एटीएम बंद करा है वो उनसे बंद नहीं होता। वो कहते हैं यार मैं नेगेटिव में बैठा रहा। मेरा हर एक से हमने किया 18 सालों में एक फीडबैक लिया, मसला क्या है? वो कहते हैं यार हम लंबे लंबे लॉसेस ले रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हैं। उनके लिए डेवलप कर रहे हैं हम लोग एटीएम, एडवांस ट्रेड मैनेजमेंट। ठीक है, आप छोड़ दो, जिस तरह कल इन्होंने बात बताई वो खुद ट्रेल करेगा। ठीक है, वो ट्रेड भी आपके लिए उठा लेगा। आपको लिमिट भी नहीं लगानी वो क्योंकि आप फिर इमोशन नहीं है ना, कंप्यूटर को नहीं पता। उसको एक इंस्ट्रक्शन दी है भाई ये मिड बैंड है, तो वो मिड बैंड पे आएगा, खुद ही ले लेगा। ठीक है, इतना। अब आपके लिए मैंने एक काम छोड़ा था कि भाई मिड बैंड पे लगा देना, वो भी ले लेंगे हम आपसे, वो भी उठा रहे हैं कि भाई वो खुद मिड बैंड पिक करेगा। अब उसको ये नहीं पता कि हायर हाई का लोअर लो का, ये याद रखिएगा। अब हम उसको थोड़ा ट्वीक्स कर रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी कंडीशंस तो देनी है ना कि यार इतना देख लो ये हायर हाई से आ रहा हो। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, सॉफ्टवेयर लिखा है, हमें पता है ये हायर हाई से आ रहा है, हमें पता है कि वहां डाइवर्जेंस नहीं है, ये भी पता है। हमें पता है ना कि लार्ज ट्रिगर्स ग्रीन नहीं है, ये भी पता है। एरिया नहीं पता। ठीक है, क्योंकि एरिया की रेंज ऊपर है। ठीक है, 4 कंडीशंस मैं आपकी चेक कर रहा हूं, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, चेक। ठीक है, वो खुद मिड बैंड पे ऑर्डर लगाएगा, वो खुद स्टॉप लॉस लगाएगा, खुद 8 टिक्स के बाद ट्रेल करेगा। अब ये आपकी इमोशन खत्म हो गए, वो लॉस में भी जा रहा है ना। अब जिस तरह आपने कहा मैंने 75 देखा, नहीं क्लोज किया, उसने ऑलरेडी 0 पे लेके आके बंद कर दिया था। राइट, सो इमोशन निकालना है इस गेम से। जिस दिन आप इमोशन लेस हो गए ना, इसमें फियर चला जाएगा आपका, क्या यार क्या स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा क्या। तो और वी कैन टॉक बुक्स एंड राइट। हाँ जी, हाँ, पता क्यों? एक टिक खा ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ 50 ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਰਾਊਟਰ ਹੈ, ਰੋਜਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਈਐਸਪੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 8 ਹੌਪ ਨੇ। 8 ਹੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਚੌਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। मेरा मिली सेकंड्स 2 to 3 मिली सेकंड्स आ रही है, लेकिन ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ক্লোਜ਼ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਕਦੀ 50 ਮਿਲਣਗੇ, ਕਦੀ 75 ਵੀ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ক্লোਜ਼ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੌਪ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਲੀ ক্লোਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਬੀਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਜੀ 500 ਬਣ ਗਏ, 600 ਬਣ ਗਏ, 700 ਬਣ ਗਏ, ਦਬਾ ਦਿਓ ক্লোਜ਼। लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ 25 ਦੇਖੇ ਤੇ 12.5 ਆਣਗੇ, 12 ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਟਿਕ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੱਬੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕ ਥੱਲੋਂ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦੱਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਚਲੋ ये रिवर्स छोटी छोटी ट्रेड जोड़े वहां रिवर्स लगा दो यार। आपने देखा -450 रिवर्स लगाया, वो आपका चली जाएगी, फिर रिवर्स लगाओगे, फिर ऊपर चली जाएगी। सेल में नेगेटिव जा रहे हो, गिव इट टाइम। अगर देख रहे हो कि वो ट्रेड गलत चला गया, बंद करो। When you do reverse, what you giving command is sell का ऑर्डर लगाया, मार्केट ऊपर चली गई, आपने जहाँ पे रिवर्स किया, अब आपने बाय कर दिया, वो नीचे आ गई, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो मैजेंटा है, वो नीचे आ गई।
पहले 250 का नुकसान, फिर 250 का नुकसान, फिर रिवर्स करोगे वो तब तक वापस आने की तैयारी कर रही है, फिर 250 का नुकसान 4 बार करोगे $1000 चले जाएंगे, फिर सब पकड़ के बैठोगे ये क्यों? एग्जैक्टली इतना ही होएगा बिकॉज़ जो रिवर्स बटन है डिसीजन मेकिंग ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल, यू रादर क्लोज योर पिन पॉइंट सारा फोकस हिल जाएगा और ये कुछ बटन तो ऐसे सिखांदे ही नहीं, पता नहीं क्यों मैं तो सिखांदे ही नहीं, बस तो बटन हमारे मैं किस तो ना मैं कभी किसी को बोलता हूँ मार्केट करो, ना बोलता हूँ बिड करो, ना आस्क करो। मैं जब लोगों को मेंटर करता हूँ ना, तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं अच्छा शुड बी बिड, मेरे को सोचना पड़ता है यार कि बिड क्या है। हम तो लिमिट ऑर्डर से लिमिट ऑर्डर बताते हैं, ये डेफिनेटली वी वांट टू गेट इन द मार्केट एट दिस प्राइस, वी वांट द प्राइस टू कम टू अस। अब वो चलती मार्केट में बिड आस्क मार्केट और इतना करेगा, ऑर्डर लगा के छोड़ देगा। anyway, these are tips from experience. एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग। Yes. हम ये कहते हैं लेकिन eventually गिर गिर के मर ना जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये मसला है। What happens is people lose confidence in the industry and themselves first. 4 गालियां पड़ती, और 4 गालियां और पड़ती हैं। अब आप 10 बंदों से बात करो, who've been trading for more than 2 years. Ask them, have you made money? Yes, we have. Have you lost money? Oh. It hurt. लगी है, यहाँ पे भी लगी है, यहाँ भी लगी है। और वाल 6 महीने ES में ट्रेडिंग का टाइम, 3 महीने, it's a loss of confidence. I lost $3,200 in 1 day. I lost my confidence. अगर होता तो 32 होना जाता स्टॉक में तो मैंने माइक्रो से $2700 कमाया। हाँ माइक्रो से 2 महीने बैठा रहा, माइक्रो से हिला नहीं मैं। It didn't matter, everybody saying I made 500, made 1000. Look, ये मिड बैंड चल गया जी, ये गैप ट्रेड था सर, देखिए बीबीज ऊपर नहीं आई, ये मिड बैंड आपने सेल, कंप्यूटर ने कहा था कि 6058 से सेल करो, आपने सेल किया, उसने आपको $100 दे दिया, डन। इतना सा काम है, आप कंप्यूटर, अब ये भी काम हम कर देंगे आपके लिए, जल्दी जल्दी कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली, वो खुद ही आपके, क्योंकि कंप्यूटर ने कहा था 60 मैजेंटा में, एग्जैक्टली नहीं नहीं, सिर्फ मिडिल वाला जो, दैट्स इट, इतने नंबरों की आपको अभी स्ट्रेस नहीं है। नहीं एटीएम ही अच्छी है, वो ऑटो बस, वेरी गुड। बहुत अच्छा है, but देखिए आप ऑलरेडी डे 3 में सीख गई, यहाँ से यहाँ बैठे आप कह रही थी मैं क्या करूंगी, अब आपको आज एटीएम आप मुझे बता रही हैं कि मैंने 8 और 12 वाला लगाया। अब वो मेरी वाली वीडियो देख लें जो एटीएम, उसमें चेस हो जा उस, हाँ ठीक है, नहीं वो एडिट, हाँ मैंने ये लिया मंडे को, ये वाला आया, it's $50, Amazon ट्रैक बॉल, भाई के पास भी ये वाला है। नहीं it's स्पेस सेवर, बिकॉज़ वो स्पेस सेवर है ना, बॉल माउस यूज करता हूँ। Like this. So you don't need to move it, just move it over. ये माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत अच्छा है, और यूज दिस वन लॉजिक। इधर ये ले लो, बोर हो गई। Okay. And this is chargeable. It gets charged. Every month with the battery it gets charged. And you can select the sensitivity. हाँ So white. हाँ मेरे ये देखें, इनके पास white. like these are cheap now, like $50-40 something like that. Only thing is कभी ये बंद हो जाए ना, मैं आपको बताता हूँ, बॉल निकाल के उसमें से डर्ट साफ कर लीजिएगा, because this one is bothering me. Put through the hole and it's all dirt here that you can clean. Amazon लिखें, Logitech, Amazon Logitech ball mouse, लेकिन आपको अगेन बॉल में भी आपको यूज करना कि एक होता है, इसमें आपने माउस नहीं मूव करना, सिर्फ बॉल मूव होता है। तो
हाँ ये वो स्टेबल है आपने, क्योंकि हमें जगह चाहिए ना इतनी, तो वो सिर्फ एनीवे। कितने बजे न्यूज़ आ रही है? 2 बजे ना? 2:30 बजे FOMC भी तो है। इंटरेस्ट रेट नहीं आगे वो भी है, FOMC मदर ऑफ ऑल। इंटरेस्ट रेट है और अभी मदर इंटरेस्ट ऑफ ऑल हाँ मार्केट वाइज। एक मिनट नहीं जी, आपका ऑलमोस्ट अकाउंट सेटअप हो गया, तो ओके 2 बजे न्यूज़ है। तो ये सिस्टम FOMC फेडरल रेट कट। मुझे सिर्फ माउस आपका कंट्रोल दे दीजिए। हाँ मैं सॉरी, नहीं मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसका वो, क्योंकि मैं मल्टी एनी डेस्क पे बैठा हुआ हूँ, तो मुझे सिर्फ उसका ये सेट करना है। माइक्रो में रहो, कुछ भी करना माइक्रो में। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आप मुझे ये निंजा की कंट्रोल सेंटर देंगे? नहीं, मुझे सिर्फ माउस से अपने निंजा का कंट्रोल सेंटर दे दें। निंजा कंट्रोल सेंटर क्लिक करें, नहीं क्लिक हो रहा। देखें कोई और विंडो तो नहीं है, मैं आता हूँ। अभी देखो जनता ऊपर गई है, ऐसा दौड़ के पेड़ भी नहीं करना, इसका दौड़ रहा हूं मैं। तो FTMO में 0.10 पे बाय लगा दूंगा। ये आपका पूरा कंप्यूटर फ्रीज हुआ लगता है, कहीं क्लिक नहीं हो रहा। देखें कोई विंडो तो नहीं खुली कोई, जिसकी वजह से मैं क्लिक नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉफिट रेट दोनों से मेरे को करना पड़ता है। हाँ, मैं करता रहता हूँ, दोनों से करता रहता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस में घुसता नहीं हूँ। मेरा ATM में आया हुआ है। हाँ तो ये अगेन ट्रेडोवेट। अब हमने पहले लेजेंड्स के ट्रेडोवेट में लॉग इन किया, अब जब आप टेक प्रॉफिट में तो इधर ट्रेडोवेट वो खोल लें। तो ये अभी मैं टेक प्रॉफिट के ट्रेडोवेट में हूँ। हाँ खोल सकते हैं, एक ब्राउजर क्रोम खोल लो, एक फायरफॉक्स खोल लो, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लो, एक क्रोम के अंदर भी सारे हो जाते हैं। ऑल यू नीड इज अनदर विंडो। मेरा पॉइंटिया भी खुला हुआ है, मेरा लेजेंड भी खुला हुआ है, मेरा ये जो टेक प्रॉफिट वो भी खुला हुआ है। एक ही विंडो में न्यू टैब एंड इट वर्क्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उसका नाम एज हो गया। तो फायरफॉक्स है, सफारी है, मैक पे क्रोम है, ये मल्टी ब्राउजर है। हाँ फिर टेक प्रॉफिट वाला यूजर नेम लाओ या लेजेंड वाला लाओ, फिर उदे च लॉग इन करेगा वन एट अ टाइम। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ मैं फाइनल सेट कर रहे हैं, एक सेकंड। यार अगर नेगेटिव भी चला ना, जैसे मेरा नेगेटिव चला, अब देखें आज आपने अपने लेजेंड्स पे $206 बनाए, दैट्स इनक्रेडिबल। ठीक है ना, देखिए यही आप सिर्फ 10 दिन कर दें, आप पास कर दें 7 दिन। हाँ ठीक है, लालच नहीं करनी। हाँ नहीं, अगर गिर भी रही है तो तुसी 1400 तक क्यों वेट कर रहे हो कि 1400 तो वापस जाएगी। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन दसो, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲਦੇ ਹੋ 1500 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ $50, 1500 ਮਿਲਿਆ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 1500 ਦਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 1400 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 200 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੇਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਕਰਕੇ। ਤੇ
Anyway, so now we will do disconnect simulation. तो simulation ਤੇ ਨਾ बेशक ना connect करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ sim ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ connect ਕਰੋ, फिर सारा कुछ disconnect करके playback चलता है. Ninja Trader. Disconnect everything, go to historical, select the instrument, and read. ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ, ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ. ਇਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ, ਇਹ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ. तो आगे बढ़ाते रहो ना यार। पाँच- ये तो एक पॉइंट पे तो फर्क है, 2 पॉइंट तो फर्क आएगा, 1 पॉइंट बढ़ाऊंगा, ये 1 पॉइंट हो गया तो मतलब का 70 को 69 पर लिया तो 70 पर 1 पॉइंट तो रखो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहो. हाँ तो अब देखें कनेक्शन में आपके पास आ रहा है माई लेजेंड्स निंजा ट्रेडर और दूसरा आ रहा है माई टेक प्रॉफिट निंजा ट्रेडर. जब आप दोनों ग्रीन होंगे तो आपका ये दोनों अकाउंट आ गए. तो यहाँ पर अब नजर आ रहा है सिम भी आ रहा है, सिम 1 भी आ रहा है, ये आ रहा है लेजेंड का, ये आ गया. तो इस तरह जितने मर्जी अकाउंट आपके डलते जाएं इधर आते जाएंगे. तो अब आपने अगर इसको एक को बंद करना है तो आप एक को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से लेजेंड बंद हो गया. अब देखिए कई दफा होता है मैं एपेक्स का टारगेट पूरा कर लेता हूँ, उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ कि भाई अब एपेक्स में ट्रेड ना हो जाए, गलती से भी ना हो जाए, पता लगा आपने अकाउंट गलत क्लिक कर लिया, लीडर गलत क्लिक कर दिया तो वो चले गए. तो एक दफा आप उस एक बैच का या टेक प्रॉफिट करें या पर डे करें, आगे आपके काफी अकाउंट होंगे, लेकिन वर्क ऑन वन एट ए टाइम. अगर आप कॉपियर भी लगा रहे हैं तो अभी आप कॉपियर के लिए रेडी नहीं है, लेकिन एक तो डिस्कनेक्ट करके और एक ट्रेडो वेट के विंडो में देखें कि कोई ऑर्डर ना लगाओ. यहाँ से मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखें मैं एक सिम पे अगर कहीं ऑर्डर लगाता हूँ कहीं पर भी और यहाँ से बंद कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर ऑर्डर, वो आपसे मैं यहाँ एक ऑर्डर लगाया, लेट्स सी चार्ट पे जाता हूँ और इस एरिया पे लेट्स सी 30-20 पे ये है ES का, मैं इधर गया और मैंने अकाउंट उठाया ये सिम का, ठीक है, यहाँ मैंने एक ऑर्डर लगाया बाय लिमिट सिम पे, ठीक है. जब मैं बंद करूंगा ना, डिस्कनेक्ट करूंगा, तो वो एक एरर देता है कि आपका एक एक्टिव ऑर्डर है. कई दफा निंजा बंद कर देता है ये एक्टिव ऑर्डर के बगैर, आपको पता नहीं है कि ऑर्डर था या नहीं, तो उसको कंफर्म करने के लिए आप जाएंगे ट्रेडोवेट में जी. अच्छा मैं सर 10 मिनट से रैप अप कर रहा हूं, ठीक सर. लेसन 1 है, ठीक है, फिर तो मैं रिकॉर्डिंग दे तो लोड नहीं ना, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम सर. मैंने 10 मिनट्स दे दो, मैं 2 बजे निकलना. नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, लेकिन एक क्लास सेशन 1 सेशन 2 है ना. नहीं वो कुछ लोग सेशन नहीं आ सकते ना, तो मैं इस ਵੇਲੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡੋਵੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ. हाँ क्योंकि वो ऑर्डर लगा रह गया सी, तो इस वास्ते ट्रेडोवेट जाओ, डिस्कनेक्ट एवरीथिंग. This is all done and saved up. It's all good. I've logged out. No problem, G. All right, guys. What time is it? 4 hours, 5 minutes. I'll wrap up this thing. Let me close this up. So we call it a day. Don't worry. All of you will be welcome by me Monday to Friday. So he does the theory. I do your. After he's done with you guys, I will take over. So. He's giving you the expedited course. But अगर बैठना बैठ जाओ, रिपीट ही होया जेड़ा सिखाना है. It's up to you. मैं तो अंदर आ जाने, उत्थे पै जाने. इंटरेस्ट रेट तो देखिए ना, हाँ, क्योंकि T20 तो मैच है, कितना मिस कर सकते पूरा. देखो 3 ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ टाइम गुजर गया, 3 महीने. चलो नहीं गुड है सर. एरिया तो all right, let me turn this in. I think he will run this session normally 2 hours, maybe he'll do 1 hour 90 minutes or something like that, because he has to give you a crash course, weekday crash course. It's the same classes, Saturday Sunday.
He's just compressing it. By the way, all of this is already recorded on our website. All 4 lectures, 6, but because he wants to give you in person, no problem. So I'll just wrap it up because I lead the floor Monday to Friday. So after you're done with him, you'll join me and then I'll get you guys going. Let me just wrap this up. देखिए लिखा इतना बड़ा बड़ा काउंटर 6 मिनट रह गए जी 6 मिनट 6 मिनट 6 मिनट हाँ हाँ 2 बजे इंटरेस्ट रेट है और सर हर चीज ऑलराइट नहीं नहीं मैं देखूंगा आज सिर्फ देखना है भाईजान अगर तो एक्सट्रीम लो पे कहीं देखी या हाई पे क्योंकि रात को अर्निंग्स हैं कल फिर उन्होंने अपनी तबाही मचानी है So I read. नहीं फिर फायदा नहीं ना वो तो हेज हो जाएगा अच्छा माइक्रो माइक्रो ठीक है ठीक है अच्छा 1-0 सिर्फ देखने के लिए अच्छा जो प्रॉफिट में है वो बंद कर दीजिएगा फिर जो लॉस वाला है वो फिर जितना लॉस कम हो गया उसमें बंद कर दीजिएगा जैसे वो प्लस 100 गया ना और वो -100 होगा 100 वाला काट दिया वो 196 भी हो गया ना तो $4 का प्रॉफिट है इस तरह हेजिंग चलती है नहीं आप वो जिसे कहते हैं ना बंदे का कीड़े का भी मर जाता है कि भाई ट्रेड डाला था मैंने इंटरेस्ट रेट वाले दिन All right. See you guys tomorrow at 9:30. Close this up. Move my workstation for tomorrow. So 5 days positive trade होना चाहिए ना नहीं नहीं हाँ टेक प्रॉफिट में नहीं सिर्फ 5 दिन ट्रेड होना चाहिए उनको नहीं परवाह ऑफ कोर्स एक दिन ट्रेड डाला जो नेगेटिव चला गया वो भी काउंट हो जाता है या नो प्रॉब्लम जी बेस्ट ऑफ लक जी special thank you to see sir आपकी personal space का भी बस देखो मैं जो टीच करना है दिखाना भी तो है कि ऐ हो रहा बिहाइंड द सीन इट्स ओके नो नो इट्स ओके